Good morning, students. Good morning to all of you. Today, fresh chapter, company accounts. We are going to start with the last chapter of foundation. Thereafter, you have to do lot of revisions. So now, very easy chapter as compared to partnership if you understand basics concept. Similar questions are asked in the exam. Weightage to this chapter is almost 10 to 15 marks. So friends, don't skip a single question in the option from day one. Now, next 5 days, we are going to focus on this chapter. It's very important one. Friends, company accounts is only related to share capital entries, forfeiture, and entries which are related to application money, allotment money. So many of you have done this in 11, 12 standard also, CBSE students. So for them, it is very easy, but science background students and those who have not done this in the 11, 12 standard, please don't worry, Sanket sir is with you. So now let's start. Before starting any session, first revise our basic rules of accounts and basic rules of accounts. But in this chapter, we are going to follow not traditional approach, but we are going to follow a modern approach in this chapter. So first thing, modern approach. Why? Because it's a capital. It is basically depending on the capital, and that's why modern approach is more appropriate for this chapter according to Sanket sir. So traditional approach, first one is debit the data, credit the creditor. This rule is not going to follow in this chapter personal account. Then debit the receiver, credit the giver. Real account debit what comes in, credit what goes out. For bank balance, you may call it as cash balance. Yes, comes in, goes out. And nominal account definitely not here because we are going to follow only debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, because we are basically focusing on balance sheet in this chapter. Friends, modern approach talks about asset debit balance, liability credit balance, expenses debit balance, income credit balance, and last one is a capital credit balance. Now you are aware of all these rules of accounts. On daily basis, we are revising these entries. Good morning to all of you once again, beta Saurabh ji. Don't worry, Dhwani. Yes, beta Dhwani. Good morning, beta Lakshita, Jyoti, आज भूमिका वही स्टूडेंट्स जो बार बार आते हैं. चलिए, सार्थक शेठ जी, जेबा, अर्शदीप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ सकता हूँ. चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी स्टार्ट करते. आज का बहुत बढ़िया सेशन है. यस सर, वी आर 100% going to prepare for this chapter. I don't want to skip a single क्वेश्चन इन द ऑप्शन बिकॉज इट्स नॉट लाइक पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में बहुत सारे यूनिट्स थे, पर कंपनी अकाउंट्स में यूनिट्स भले रहने दीजिए, पर क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस है. सो एवरी वन ऑफ यू प्रॉमिस मी सर, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन द ऑप्शन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन द ऑप्शन. यस, चलो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. चलो फटाफट फटाफट फटाफट, लेट्स स्टार्ट. What we are going to see? So this is a company account. बहुत पुराना फोटो है, अभी तक बदला नहीं है. Yes, so company accounts में units in this chapter, what we are going to see? Number one, introduction to company accounts. Introduction, company accounts. Yes, very good, beta. Sarthak said issue, forfeiture, and reissue. Beta, introduction to company accounts, we already studied it in the लॉ सब्जेक्ट. सो आई थिंक लॉ में आपका कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हुआ रहेगा. सो जस्ट आई विल ब्रीफ यू ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट इन डिटेल बिकॉज फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट इज बेसिकली थियोरेटिकल यूनिट एंड थ्योरी को अपने को लगाव ही नहीं है. आपको भी पता है थ्योरी, बिकॉज अकाउंटेंसी आई नॉर्मली फोकस ऑन प्रैक्टिकल पार्ट. बट 5 मार्क्स के लिए दैट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स. ओके, माइट बी दे मे आई से मे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू company accounts theory question. Okay, so theory questions, yes, tell me it in the comment section. Already studied theory subject का आपने company accounts को theory already study किया है या बाकी है आपका company accounts? I don't know exactly, but I think now your batch of law is already getting over. So I don't know exactly whether you studied this or not yet. Okay, tell me fast. अनुश्री जी क्या कर रहे हो? Yes, then next one is beta issue of debentures. So debentures, we have to understand what is the debentures and shares, the difference between this. Yes, tell me it in the comment section. Already studied or not studied? You know the difference or not known the difference?
So let's start with unit number 1, introduction to company accounts. This is a basically theory chapter. So unit number 1 is purely theory, but in this, what we are need to require, better balance sheet and P&L pro forma is very, very important for me. Balance sheet and P&L pro forma. Yes, sir, studied. We already studied in the law. Okay, already completed. Very good. लॉ में कंप्लीट हो गया है. यस बेटा, कोई बात नहीं. चलो चलो चलो. Salient features of company is PC, DTL, MRP, not a citizen. Is PC, is तो वर्ड सबको पता है. PC पर्सनल कंप्यूटर बेटा. DTL डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ. MRP आपको yes, maximum retail price, you are aware of this. MRP, not a citizen. तो ये आप memory technique याद कर सकते हो. This is a memory technique for your salient features. So beta, I'm not going to tell you exactly, but इतना तो एक एक line में मैं बता दूंगा. Is PC, DTL, MRP not a citizen? You can write this salient feature. They in law subject you may get the question, what are salient features of company? I don't know exactly now. I say not asking such type of silly questions, but still be, yes, for knowledgeable purpose or for your BCom purpose, this question is important. Salient features of company. Okay, so salient feature is for incorporated association. So कंपनी का एक खुद का नाम रहता है, रिलायंस कंपनी. तो हम लोग अंबानी जी उसको चलाते हैं, पर बेटा हम लोग रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसा बोलेंगे, ना कि अंबानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, देन एस फॉर separate legal entity. So it's a separate legal entity. You cannot sue अंबानी जी, you can sue company, that is रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट हमने कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उनको पकड़ेंगे, नॉट अंबानी जी को. तो नेक्स्ट वन इज पीसी. पी फॉर, यस बेटा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कंपनीज नेवर बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गेट रिटायर और वो अपने सीट से निकल जाएंगे, बट कंपनी इज नेवर गोइंग टू die. So perpetual existence. Okay. C stands for बेटा कॉमन सील. सो कंपनी का अपना एक सिक्का होता है, स्टैंप होता है, कॉमन सील होता है, इतना याद रखिए. सो कंपनी कॉमन सील. DTL, D फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सो बेटा मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप. ओके. Next one, T for transferability of shares. Better in private company you cannot transfer shares easily, but in public company you can transfer these shares. Okay. L for limited liability. So in this case, what is limited liability? That is the face value or issue price. Now my part is going to start limited liability. So that I'm going to explain you face value and issue price. So that is a basic difference. But see, my liability is limited here. It's not like sole proprietor that your liability is unlimited or HUF or partnership firm. Here your liability is limited to the extent of share price. Okay. So here it's a limited liability. So now what is limited liability? That I'm going to tell you it in the while solving questions. Okay. ठीक है. चलो, limited liability. M for maintenance of books of accounts. But obvious, now it's related to me. Books of accounts are going to maintain. It's not law subject now. Now it's maintenance of books of accounts. Sanket sir will tell you that journal entry, ledger, सब बताया है already. So maintenance of books of accounts is mandatory because company has to maintain books of accounts as per law. It's very simple. Okay. R stands for right of access to information. Okay, सार्थक सेठ जी बोल रहे कि सर in 2015 common sense is made optional. Very good बेटा, law तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है तू. तो yes, good. So बेटा P stands for periodical audit. Yes, so audit is also my subject. So audit, you have to do auditing in case of checking of accounts. Auditing means what? Checking of your accounts is called as auditing that you have to do, and it's not a citizen, sir. It's not a citizen. So it does not have the right, company does not have right to elect any party. So election का right इनको नहीं है, इतना ही याद रखिए. Okay. वेरी गुड लक्षिता, वेरी गुड. चलो, बहुत सारा ज्ञान लोग दे रहे हैं मुझे अभी. आई नो यू ऑल पीपल आर अवेयर अबाउट लॉ सब्जेक्ट. ठीक है, ये तो मेरा सिर्फ ड्यूटी था. आई नो आई एम नॉट अ लॉ फैकल्टी, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू व्हाट आर द salient features. So this is a memory technique. Is PC, DTL, MRP not a citizen? I for incorporation,
incorporated association. Second one, separate legal entity. P stands for perpetual existence. C stands for common seal. D stands for distinction between ownership and management. T stands for transferability of shares, limited liability. After that, DTL हो चुका है. M for maintenance of books of accounts, right to access the books of accounts or information, sorry, periodical audit, and not a citizen. So these are some memory technique. Yes, have you written this memory technique, beta? चलो जल्दी से लिख लो if you want. If you want, you can write it. No problem. चलिए चलो 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 फास्ट. What are the types of company? ये भी आपको पता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. सो मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा. सर प्लीज लेट अस टू टेक स्क्रीनशॉट. ओके सार्थक सेट. सार्थक ने बोल दिया स्क्रीनशॉट लेना है तो लेना है. यस, ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस बेटा, एकता तिवारी, वेरी गुड. क्या लॉ का नॉलेज सब लोग झाड़ रहे हैं आज? एक नंबर बेटा. यस, ठीक है ना. एटलीस्ट वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. Ruchi Pandya is saying, sir, it's my first class and I love your teaching style. Okay, thank you बेटा. बाकी के क्लासेस भी अटेंड कर लेना, बिकॉज अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर करियर, बिकॉज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि अकाउंटेंट है. आपको स्टार्टिंग से लेकर देखना बेटा, ताकि आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए. ओके, सो रुचि, वेलकम टू आईसीआई क्लासेस बेटा. चलो. So what are types of company, sir? What are types of company? Yes, sir. What are types of company? Tell me fast. Types of company क्या क्या है? So government company, then you have foreign company, then you have private company. बहुत सारी कंपनीज, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी. सो वन पर्सन कंपनी वाज नॉट देयर इन माय टाइम. ओके, सो ये वन पर्सन कंपनी अभी 2013 के वजह से आया है. 2013 में दे इंट्रोड्यूस दैट स्मॉल कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी होता नहीं था. मिनिमम 2 members आर रिक्वायर्ड फॉर टू फॉर्म द प्राइवेट कंपनी, और 7 members था इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. बट नाउ इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, यू कैन स्टार्ट योर कंपनी विथ वन पर्सन. बेटा, अकेला ही इंसान पूरा कंपनी स्टार्ट कर देगा. स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा. अनलिस्टेड कंपनी, प्लीज कंप्लीट इन दी law portion. Unlimited company, company limited by shares, this is only duty. I'm just telling you ki these are some types of company. Company limited by guarantee and subsidiary company. I think you already covered this in the law subject. So tell me it in the comment section, have you completed it? So should I go to accounting part or still should I continue with this? Yes beta. Kotla Shrishta is also, Shrisha bhi bol rahi hai, welcome to ICA class. Kotla, कहाँ से हो आप? SRO. Okay. So beta, please tell me, are you going to read it in by yourself, the types of company from study material, or should I explain you all these things? Because this is not in law account subject, this is required in the law subject, but you should know all these things. So tell me fast, should I focus on my accounting point of view, or I have to take these types of company also? So tell me. We did it in the law, sir. Please, 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 all topics is covered. Please explain further. Okay, 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 okay. Okay, accounting parts. चलो, thank you. आप लोगों की सहमति से मैं अकाउंटिंग पार्ट पे स्विच हो रहा हूँ. नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हु इज टेलिंग टू टेक दिस लेक्चर. ये सबको पता है. गवर्नमेंट कंपनी क्या होगी? गवर्नमेंट का परसेंटेज. फॉरेन कंपनी अपने इधर इंडिया में नहीं स्टेब्लिश हुई, बाहर स्टेब्लिश हुई. सो इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. ओके, सो इट्स अ फॉरेन कंपनी. प्राइवेट कंपनी भाई अपने अपने में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फ्रेंड सर्कल में जो कंपनी आप फॉर्म करते हो. सो व्हाई यू नीड टू फॉर्म अ कंपनी? सो आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज suppose if I started my business, okay, if I started my business, now I have option to record it under sole proprietor. Suppose if I started with my friends, so I have two options, either go by company or go by partnership firm. So now you only tell me from practical point of view. From practical point of view, I don't want to tell you exactly from the from our subject point of view. Now tell me, what are benefits that I'm going to get due to formation of the company and not formation of the partnership firm? So beta, basically, yes, रहने दीजिए, don't type it. So comments मत देते रहिए. I am telling you the shortcut. Okay, so if I want to start a company, so legal restrictions are there.
ओके, लीगल रिस्ट्रिक्शन मींस क्या, वो कंपनी को फॉर्म करना है तो यू हैव टू विजिट दैट, सॉरी आरओसी को अभी तो विजिट करने की जरूरत है, ऑनलाइन प्रोसेस, बट यू हैव टू पे सम फीस, देन यू हैव टू ऑडिट एवरी टाइम की एक सर्टन लिमिट के आगे गया तो ऑडिट नहीं, फ्रॉम सिंगल 1 रुपी यू हैव टू डू ऑडिटिंग पर, यस बेटा ऑडिटिंग होना दे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ये तो अच्छी बात है, बट ऑडिट करके लेना ये थोड़ी क्या होता है, दीज आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ओके, फिर कंपनी के मीटिंग्स लेना जरूरी है, मिनट्स लिखना जरूरी है, फिर उसका एजेंडा देना रहता है मीटिंग के पहले, ये सब मतलब कंपनी सेक्रेटरी को खुश रखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को खुश रखो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि वेरियस रूल्स आपके ऊपर आ जाएंगे। सपोज ये देखो, एज अ क्लाइंट आई ऑलवेज टेल टू माय क्लाइंट की गो विथ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बेटा पैसा भी मिलता है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये मैं बोलूंगा, पर सपोज 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 एकदम पास के रिश्तेदार है, ये एक सिर्फ बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, डोंट टेक इट मतलब एग्जैक्टली, बट ये जस्ट एक बता रहा हूँ कि पास के रिश्तेदार होंगे और मुझे पता है ये ऑडिट फीस देने वाले नहीं है, ये तो ये करने वाले हैं, तो मैं उनको बोल देता हूँ भाई प्राइवेट कंपनी मत फॉर्म करो, पार्टनरशिप फॉर्म कर लो। पार्टनरशिप फॉर्म किया तो दिमाग को दही नहीं रहेगा बेटा, क्यों जाके मैं रोज के रोज उनका वो पूरा मिनट्स बनाने को बोलूंगा, या कंपनी सेक्रेटरी, वो तो पैसा देंगे नहीं, गया तो मेरे ही जेब से जाएगा और उल्टा ये भी बढ़ जाता है। तो मेरे जो पास के क्लाइंट्स होते हैं एकदम मतलब रिश्तेदारी में, तो मैं उनको बोलता हूँ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म करो, एंड जो मेरे सपोज मुझे पता है कि दे विल पे मी, सो मैं उनको तो बोलता हूँ कंपनी अकाउंट्स, तो उसमें क्या होता है कि ये एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डिफरेंस, बट हाँ कंपनी फॉर्मेशन का क्या फायदा होगा, इफ यू फॉर्म कंपनी तो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, यू हैव टू फॉलो प्रॉपर एक्ट, आपका पार्टनरशिप एक्ट कितना सा है और कंपनी एक्ट कितना बड़ा है। ओके, सो वो सब फाइलिंग करना, एनुअल फाइलिंग करो, ये एमओए बनाओ, एओए बनाओ शुरुआत में, मतलब फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यू गॉट द डिफरेंस? ओके ओके, यस 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 यस, ठीक है। सो यस, सो दिस आर सम ये सब डिफरेंसेस है ना, रियल लाइफ में जाने के बाद ही समझेंगे। पर ये प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है, पब्लिक कंपनी, अभी प्राइवेट कंपनी तो ऑप्शन नहीं है, पब्लिक एक बार एक लिमिट के आगे चले गए तो पब्लिक कंपनी यू हैव टू फॉर्म। ओके, 1 पर्सन कंपनी, yes there are some rules, small company, listed company is listed on the stock exchange, in simple way you can trade on these shares, unlisted company you cannot trade, suppose for example, so a कोई unlisted company है, okay, so I cannot trade on that shares because it is not available on the stock exchange, then unlimited company means guaranteed company होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी, इफ यू इन्वेस्ट 51% एंड मोर इन दैट कंपनी, सो 51% जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है इट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी इन विच यू हैव इन्वेस्टेड, एंड कंपनी हु इज इन्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी, कंपनी हु इज हैविंग 51% इट इज कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी। ओके, यस, एकता तिवारी ने बता दिया सर, आई विल रिमेंबर दिस एडवाइस, वेरी गुड बेटा। जेबा भी बोल रही है, अनुष्का भी बता रही है कि सर मैं डेफिनेटली, रिश्तेदार आए तो क्या फॉर्म करेंगे, चलो जल्दी से बताओ। इफ योर रिलेटिव्स आर देयर इन योर, बेटा व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रैक्टिस, व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रैक्टिस, एंड देन बेटा फर्स्ट योर रिलेटिव्स आर देयर, सो एंड दे आर फॉर्मिंग, दे आर आस्किंग यू शुड आई फॉर्म कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म, सो व्हाट विल बी योर एडवाइस, टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन, चलो जल्दी से बताइए। एकता तिवारी, यस बेटा, एकता तिवारी बोल रही है सर आपका कोई क्लोज रिलेटिव ये लेक्चर ना देखे, वेरी गुड बेटा। चलिए ओके, चलो स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कंपनी आई ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये बेटा आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स नाउ, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ओके, हाँ, नाउ 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 माय पार्ट इज स्टार्टिंग। ओके, चलो चलो चलो, यस पार्टनरशिप फॉर्म, सबने आंसर दिया। ओके, सब लोगों ने आंसर दिया। देखो क्या सर, क्या सिखाते सर, ऐसा नहीं सिखाने का, हाँ फिर भी ये थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड वी हैव टू, नहीं तो क्या होता है वही सब सर, कंपनी ये सब लोग समझाते ही है, सब आने के बाद 11-12 स्टैंडर्ड से फैकल्टी वही बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच गवर्नमेंट हैज मोर देन 51% शेयर, अरे वो सबको पता है भाई, पर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए तो मजा आता है। ओके, यस बेटा हिमांशु, यस, चलिए, now we are going to start with preparation of financial statements. So financial statement means what? Financial statement means balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement of changes in liquidity, and then notes to accounts. Sir, please tell us in detail. Now, please wait. अभी तक जो था that was quick revision. Okay. अभी जो जाऊंगा थोड़ा slowly जाऊंगा. So preparation of financial statements. So understand preparation of financial statements.
ओके, ए बेटा ऐसा लिखने का है, ये ऑफ रिकॉर्ड है। हाँ, नहीं तो आप आपके रिश्तेदार आएंगे, हमारे सर ने बता के रखा है पार्टनरशिप फर्म खोलने का, ऐसा नहीं बोलने का उनको। हाँ, yes, financial statements comply with notified accounting standards. Okay, so financial statements comply with notified accounting standards. Sir, what are accounting standards? Accounting standards means these are issued by ICI. Okay, so in India we have now 29 accounting standards. Apart from that, we have Ind AS. Now, what is Ind AS? What is accounting standard? Please wait for some years. एक 6 महीना वेट कर लीजिए। इन इंटरमीडिएट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो डोंट वरी। सो इन अब मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ सर इंड एस भी है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयर आर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देखो देखो देखो, यस मैं आई विल शो यू। और ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं बता ही देता हूं आपको। ओके 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 ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देयर आर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी वेबसाइट चालू होगी क्या? मेरे इधर का नेट, इधर का गूगल, प्लीज आस्क गूगल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चलो फास्ट फास्ट आ जाओ। और स्पेलिंग, ओके। नाउ इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय आईसीआई। हाँ, एक कंट्री क्या लिखा है? बाय आईसीआई। हाँ, सी। सी, ओके। So these are some accounting standards. S1 to this standards. Why standards? Because standards will maintain uniformity. So what is important? Accounting standards are going to maintain uniformity. चलो मैं आके बंद करता हूँ। S1 disclosure of accounting policy, S2 inventory valuation, S3 cash flow statement, S4 contingencies and events occurring after balance sheet date. S5 net profit or loss for the period prior period items changes in accounting policy. S6 is the removed. S7 construction contract. S8 removed. S9 revenue recognition. S10 property plant and equipment. Then S11 effects of changes in foreign exchange rate. S12 is the government grant and S13 is accounting for investment. S14 is अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। पर आई थिंक 13 तक आपके सामने है। आंखें बंद थी, फिर भी मैंने पहले ही देख लिया था 13 नंबर्स तक। सो हियर depreciation or say 6 number, now it is removed, beta 6 number it is removed and it is merged in the S10. Okay, so now here you have S14 to S29. So S14, yes beta, accounting for amalgamation. 15 is employee benefits, 16 is borrowing cost, 17 is segment reporting, 18 is related party disclosure, S19 is accounting for leases, 20 is earning per share, 21 then consolidated taxes on income. S23 is S23 is your associates. S24 is discontinuing operation. S25 is interim financial reporting. S26 is intangible asset. S27 investment in joint venture. S28 होने के joint venture के बाद S28 is impairment of assets and S29 is provision contingent liabilities and contingent assets. Okay, so there are 29 accounting standards. बेटा सिर्फ नाम याद नहीं करने, अंदर का कंटेंट भी याद करना है, and that you are going to understand it in the intermediate level. कहाँ पे आपको याद हो जाएगा? इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ये सब याद हो जाएगा। ओके, सो नो नीड टू मग अप ऑल दीज थिंग्स, इट इज जस्ट ओनली कि यू हैव टू स्टडी एट इंटरमीडिएट लेवल। ओके, ऑल दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो every financial statements, every financial statement must comply with this notified accounting standards. Okay, notified accounting standards
ओके, नो बेटा, ठीक है। तो these accounting standards which are notified, financial statement comply with the notified accounting standards. Board of directors, board of directors shall lay financial statements in every AGM. तो बड़ा माहौल बनाते हैं, थोड़ा एक समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट हैपेंस, अपने जो अकाउंटेंट्स है, ओके, now my accountant, yes, I will tell you exactly this story, what is going to happen in real life. Okay, first we have to do accounting. Who will do accounting? Internal management. Okay, up to 31st March, our calendar year is not there, our financial year is starting from 1st April up to 31st March. Yes, I will tell you all this visualization. Okay, what is going to happen in real life. So 1st April to 31st March, you have to prepare your books of accounts. Now books of accounts, who will maintain this? Internal management. Okay, chartered accountant bhi ho sakta hai, ya only accountant might be there. For example, your budgets are more. If your company budgets are more, तो chartered accountant को काम को रख लो ना भाई, दे दो जो महीने का 5-6 लाख रुपया दे दो, give 5-6 lakhs rupees per month as a salary. Okay, he is going to work as an accountant. Otherwise, basic, if you don't want to spend salary on them, so accounting is done by anyone. It is not mandatory that chartered accountant will do the accounting, but chartered accountant जब accounting करेगा ना भाई, पैसा तो लेगा वो, तो उसमें chartered accountant को आप employ कर सकते हो according to your budgets और accounting part कौन करेगा? Internal management. Okay, so chartered accountant who is doing that accounting, he has no right to check it. भाई जो check करेगा और जो काम करेगा वो दोनों same कैसे रह सकते हैं? So auditing will be done by chartered accountant. दैट इज मैंडेटरी। भाई अपना ठप्पे का इंपॉर्टेंस है, देयर इज बेटा अपना जो ठप्पा है, ठप्पा मतलब क्या? आवर सील, दैट इज आवर स्टैम्प, इट हैज इंपॉर्टेंस। ओके, सो एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैज टू डू ऑडिटिंग ओनली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटिंग का यस ये, उसमें अकाउंटेंट इज नॉट इन्वॉल्व। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होगा तो ही आप ऑडिट करवा सकते हो, इट इज मैंडेटरी। ओके, सो अंडरस्टूड। सो फ्रॉम 1st April to 31st March you have to maintain your books of accounts. Who will maintain? Accountant oblique chartered accountant. It is not mandatory that only chartered accountant will maintain books of accounts. ओके, तो ये किससे भी करवा सकते हैं। आफ्टर 31st March, first thing what you have to do, we have to audit our books of accounts. So our maximum our maximum timing which is given is AGM you have to take place before 6 months. Okay, 6 months is a maximum time after 31st March. You have to put this annual accounts in front of your shareholders. So now see the word क्या आया? Shareholders. Okay, shareholders मतलब कौन? Who are investors of your company. Okay, who has subscribed for your share. Sir, what is share? Share we have to understand. Okay, share मतलब क्या? Let's understand, but remember it is an investor. What is shareholder? He is an investor. Okay, investor wants कि उसने जो पैसा लगाया हुआ है, what he has invested, yes, whether it is properly utilized. Everyone has a right ना भाई, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैनेजमेंट इज डिफरेंट, management is different. In that case, I will ask for accounting. Okay, and that accounting, when done by chartered accountant, then वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, इसका मतलब कि वो बंदे ने बराबर अकाउंटिंग किया, बिकॉज ही हैज नॉलेज फॉर दैट, ही हैज इन्वेस्टेड हिज 5 years ऑफ लाइफ फॉर दिस स्टडी पर्पस, एंड नाउ ही इज डूइंग ऑडिट। मींस उसके ऊपर भरोसा रखा जाएगा, सीए के ऊपर भरोसा रखा जाएगा कि यस इसने ये ऑडिट करवाया हुआ है। ओके, सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, books of accounts maintained by accountant or chartered accountant, after that audited by chartered accountant, then board of directors will approve this. Sir, board of directors, who is running your company, who is running your company on behalf of shareholders, on behalf of shareholders, he is running your company, they are running your company. Board of directors is not per single person, there is a team of board of directors. Okay, and then board of directors will approve this accounting. Approve, sir, yes, auditing is done by chartered accountant, but ultimately your whatever mishappenings,
noted by auditor has to be approved by board of directors. They have to change this policy if they think कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ गलतियां लग रही है, ऑडिटर को कुछ गलतियां लग रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स will ask that accountant of the company to change according to the opinion of the auditor. It's not mandatory. And if they are not following according to chartered accountant, he has power to note down all these things in the audit report where he is finding any mishappenings. ओके, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेटा बोलते ना साइन में बड़ा दम है, इसीलिए तो बोलते कि भाई उसने बोल दिया ये चाहिए तो चाहिए, और उसने बोलने के बाद ये अकाउंटिंग उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो क्या कर सकता है? इट्स वेरी सिंपल, ही विल गिव इट इन द ऑडिट रिपोर्ट. वो शेयर होल्डर को कहा रोज को बोला, सबको बोलेगा ए इधर आ इन्वेस्टर, ये देखो ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हर एक को बोलेगा क्या? नहीं भाई, वो एक अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा एंड ऑडिट रिपोर्ट में डाल देगा. ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, वेरी इजी. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अप्रूव दिस ऑडिटर्स रिपोर्ट. And after that, then board of directors will call for investors meeting. And then investors meeting is called as annual general meeting. It's very simple. पूरा आंखों के सामने आया क्या? All things, देखो क्या होगा, सबसे पहले हिंदी में बता देता हूं. पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, सॉरी, सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग करवा के देंगे. अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है क्या? भाई बजट ज्यादा है तो करवा लो, कंपनी का बजट कम है 10-15 हजार का है तो बेटा कोई किसी को बुला लो. ओके, हम लोग तो इतने सैलरी में काम करेंगे. फिर क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हुआ, फिर ऑडिटर, पहला दूसरा रोल किसका होगा? ऑडिटर. ऑडिटर को बुलाया जाएगा, ऑडिटर प्लीज चेक दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया जाएगा, बेटा रिक्वेस्ट बोलने का, हाँ रिक्वेस्ट, अपना एक पूरा का पूरा माहौल बनाना है उधर, तो रिक्वेस्ट करने का पहले, तो रिक्वेस्ट करके क्या करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो पूरा ऑडिट करके देगा. कैसे? अरे वो सीखा है ना 5 साल, सीए डिग्री क्यों ली है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, कंपनी लॉ फॉलो करेगा, ऑडिटर्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, पूरा का पूरा फॉलो करने वाला है. उसके बाद क्या होगा? ऑडिटिंग जो भी सीखे 5 साल, पूरा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा करना है उसमें. ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? वो उसको लगा गलतियां है तो अपने रिपोर्ट में डालेगा. वो यदि वो गलतियां उन्होंने सुनी नहीं तो किसको सुनानी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटेंट से बात नहीं करेंगे, हमें डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करना है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल देने का ये गलतियां है, क्या कर रहे हो? वो बोलेंगे भाई मैं सुधरा देता हूं. नहीं सुधार रहे हो तो क्या? अपना ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लिख देने का. ओके, समझ में आया पूरा प्रोसेस? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो बुक्स को अप्रूव करेंगे. भाई उनके बुक से तो पूछना तो पड़ेगा ना उनको कि भाई ये बराबर है, हमने जो ऑडिट करवाया है ये हमारे पॉइंट से सॉल्व कर सकते हो तो पॉइंट को मिटा देता हूं, नहीं सॉल्व कर सकते हो तो वैसा ही रखूंगा मैं पॉइंट. ओके, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है भाई, इंडिपेंडेंट है ऑडिटर. उसके बाद क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसका रिपोर्ट एक बार उन्होंने अप्रूवल दे दिया, फिर वो लोग क्या करेंगे? एजीएम लेंगे. एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होगी? इन्वेस्टर्स की. इन्वेस्टर्स लोग, शेयर होल्डर्स लोग, वो सब आएंगे मीटिंग को. यस, ऐसा हुआ, हमें ये करना है, फ्यूचर में एक्सपांशन करना है, हमें ये फलाना, ये वो सब बताएगा इन्वेस्टर्स मीटिंग में. और एजीएम में एक बार ये बुक्स भी रख देगा, भाई ये देखो ये हमारे ऑडिटर ने सब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल किए हैं और ये सब उसने ये रखा हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है, और ये लॉसेस प्रॉफिट फाइनल करके बैलेंस शीट हमारी ये है, हमने इतना इतना किया हुआ है. हमारे बुक्स नहीं है, किसने चेक करवाया? पूरा हमने सीए को हायर किया है, हमने सीए ऑडिटर बुलाया है, उसने चेक किया है, तो आप उसके ऊपर भरोसा रख सकते हो. ओके, और सीए ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, इसका मतलब पूरी इंडिया नहीं, पूरा जितना भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे ये अकाउंटिंग क्या है? करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर है, बस खत्म हो गया. दिस इज हाउ इन रियल लाइफ यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट नाउ? ओके, चलो. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, तो सीए का ठप्पा कितना जरूरी है आज लाइफ में, याद रखो. इन स्टार्टिंग कंपनी अकाउंट्स, कंपनी में अपना बहुत इज्जत रहेगा, इतना याद रखो. यस, नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1. नाउ बेटा दिस इज, देखो ये लॉ है. लॉ में क्या हुआ है? एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, यू डोंट हैव टू मग अप ऑल दिस थिंग्स, बट जितना याद हो सकता है उतना याद कर लीजिए. ओके, मगअपिंग मुझे तो कभी हुआ नहीं, मेरे लाइफ में मैंने मगअप नहीं कर पाया, ऐसे रट्टा मारना अपने को जमता नहीं बॉस. तो बैलेंस शीट जो है,
बैलेंस शीट इज अ शेड्यूल 3 पार्ट 1, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। शेड्यूल 3 पार्ट 1, यस इट्स इन द बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट फॉर्मेट इज देयर। बेटा बैलेंस शीट फॉर्मेट इज मैंडेटरी ना। ये देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिकॉज किसी ने तो लिख के देना चाहिए ना, नहीं तो मन में आए वैसा बैलेंस शीट बनाओगे। अलाउड करेंगे क्या ICAI या कंपनी लॉ? नॉट अलाउड। सो देयर इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट। सर व्हाट इज द प्रेजेंटेशन? बताएगा मैं, वेट। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, स्टडी मटेरियल, वेयर इज योर स्टडी मटेरियल? देखो आपके स्टडी मटेरियल में देयर इज बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा। सर आज का दिन देता हूं, पूरा प्रो फॉर्मा याद करना है। बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा पार्ट 1 शेड्यूल 3 इज द बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा। सर प्लीज, हाँ ये रट्टा मारना पड़ेगा। जहां पे सर बोल रहे रट्टा मारना पड़ेगा तो मारना पड़ेगा। Okay, 10 to 15 minutes. You have to by heart this balance sheet pro forma. It's very important in your future life also at intermediate level, not at foundation level, but it is important at intermediate level. So I will tell you to by heart this balance sheet. I will give you my timing. कितना टाइम में मुझे याद होता है, and then you follow your timing. Okay, tomorrow please tell me कितने मिनट्स में आपने बैलेंस शीट याद किया. So form of balance sheet is given in the question, is given in the study material on page number 10.8. So 10.8 में you can see there are comparatives. Comparatives sir, comparatives. आज तो रटना है पूरा. Comparatives are important, sir. Comparatives are important. Why it is important? Because it's a current reporting period and it's a previous reporting period. बेटा comparison तो होना चाहिए ना, कि पिछले अटेम्प्ट में कितना मिला था, ये अटेम्प्ट में कितना मिला. नहीं बेटा, अपने को अटेम्प्ट नहीं लगाने हैं. So yes, in current period and what was my performance in the last year, everyone wants to know because I'm at the growing stage. Okay, so suppose growing stage. Now ICAI के ये जो YouTube sessions है, when we started, हार्डली देयर आर 50-60 स्टूडेंट्स. अभी ऐसा एक बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स भी, डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग. अभी संकेत सर रहेंगे, बाकी की फैकल्टीज दे आर टेकिंग एफर्ट्स ऑन दिस सिलेबस. पूरा का पूरा आपको फ्री में बता रहे, फिर भी कितना अच्छे से बता रहे. सो डे बाय डे वी नो अवर परफॉर्मेंस. सो प्रीवियस पीरियड एंड करंट पीरियड वी हैव टू कंपेयर. सपोज देयर माइट बी अ चांसेस, लॉसेस भी हो सकते हैं बेटा, डेस्टिनी है तो ये हो सकता है, बट इट इज अ कंपैरिजन. इन इंडिया वी आर फॉलोइंग two comparatives. In USA, if you see the balance sheet of USA, you will get 3 years का comparison. Current year, last year, next year कैसे होगा? कुछ भी बोलते हो सर, next year नहीं, last to last year. Next year का कौन जानेगा? Accounting is historical cost concept. It's not prediction of the future. Okay. So current year, last year, and last to last year, they are showing 3 comparatives. Okay. They are showing 3 comparatives, and in accounts, it is, in India, we have 2 comparatives. क्या बोलते हैं इसको? Comparatives. Comparatives means showing differences of current year and last year. Show the performance. Equity and liability. See, now the first word, sir. What is the first word? It's a equity. Sir, नया word आया. Equity. Yes, anyone can tell me the equity means what? Equity means what? Yes, tell me fast. Okay. Equity means what? Equity means what? मानवी खन्ना जी, नेम एंड डेट लेफ्ट में है या सेंटर में लिख सकते हैं? बेटा किधर भी लिखो यार, नेम एंड डेट काय को. यस, यहाँ पे ठीक है ना, सेंटर में लिखो बेटा. प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अरे इतने छोटे छोटे मार्क्स ऐसे नहीं काटती है बेटा. ऑलरेडी यू आर, यस, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स नाउ. इट्स नॉट यूर 11-12 स्टैंडर्ड की फैकल्टीज दैट इधर ही लिखो नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट इधर लिखो. इसके मार्क्स नहीं काटती रही है ICAI. ओके, सो आई गॉट सम. यस बेटा संयमा जी, आपको क्यों नहीं बुलाए गए? इफ यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर द मीटिंग. जहां पे भी मीटिंग होगा आपको पूरा का पूरा मीटिंग का ये प्रपोजल आ जाएगा.
वो पूछेंगे आपको कि ये एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेंगे आपको, वो नोटिस में आपको डेट टाइम सब लिखा रहेगा, आपको जाके वहां पे सपोज जाना है तो जा सकती हो, कौन नहीं। अभी यहाँ पे पुणे में रह के मुंबई में ऑफिस रहेगा, कौन जाएगा यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, पर लोगों को जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग जाते हैं बेटा, जिनके पास टाइम है, जिनको इंटरेस्ट है, वो लोग जाते हैं। हाँ, बहुत सारे आंसर्स आ गए। इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ओ माय गॉड बरकतुल्ला जी, इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी लिख रहा है तू। नो बेटा, नो 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 नो। इक्विटी एंड लाइबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। इक्विटी मीन्स ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इक्विटी मीन्स ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मीन्स ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे बेटा, लॉ पढ़े हुए हो तुम लोग, ये क्या आंसर दे रहे हो? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज इक्विटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस? अरे, ओनर विल नेवर आस्क यू हिज मनी एक्सेप्ट लिक्विडेशन। Okay, he can transfer his shares. In company, remember, in partnership firm and in company you can easily transfer your shares. I'm talking about public company and not private companies. Okay, think big. Okay, so you'll get big. So we are not talking about private companies, we are talking about public company, listed company. So you can easily transfer your share, but only owner will get change. Only owner will get change, and he cannot demand his money back up to the time of liquidation. ओनर कभी भी पैसा मांगता नहीं है जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब। ओनर्स बदलते रहेंगे, ये एक पब्लिक कंपनी में अच्छी बात है। सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप में ये पॉसिबल नहीं है, ओनर्स बदलते नहीं रहेंगे। बट कंपनी में ओनर्स शेयर्स दो बेच दो, ओनर बदल गया, ओनर बदल गया, ओनर बदल गया। ओके, ट्रांसफर योर शेयर, ओनर बदल गया। But when owner will demand for money at the time of liquidation, he will demand this money only at the time of liquidation. Only at the time of liquidation. And what about liability? Liability means outsiders. Liabilities means outsiders. Liability क्या होती है? It is outsiders contribution. Outsiders paid you. Okay, outsiders given you money. This is called as liabilities. Oh, so here it is a perfect presentation. It's not like sole proprietor. Here presentation is different. Okay, so those, sir, AGM और EGM में difference होता है क्या? Yes, बेटा केशव ठाकुर. Some decisions have to be taken in the AGM. Some decisions, if it is required urgently, so you have to call for extraordinary general meeting. Okay, EGM and AGM. I'm telling you, don't learn these things. It's very logical. It's very logical. Law is a subject where you need a logic. Okay, वो theory में दिया रहेगा, पर आप थोड़ा visualization कीजिए. You will enjoy law subject. Okay, and even accounts में तो क्या बेटा, basic 3 rules of accounts you have to remember. Chartered accounting is not a course of like science. It's a बेटा common sense course. फर्स्ट थिंग इन योर माइंड। तो आप है ना, रट्टा मारने के लिए मत पढ़ना। लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो, तो इंटेलिजेंट का छोड़ दो यार, वो तो बहुत अलग लेवल के है। इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट, थिंक लॉजिकली कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, अप्लाई बेसिक्स, ये क्यों कर रहे। सो लॉ मेकर इज ऑल्सो मेकिंग ऑल दीज थिंग्स इन द स्टैंडर्डाइज फॉर्म। तो लॉ वाला क्या करता है भाई, उसको लॉ मतलब क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। वो भी इंसान ही था ना जिसने लॉ बनाया, तो आप उसको रट्टा सिर्फ मारने के लिए मत देखो यार, एंजॉय कीजिए लॉ सब्जेक्ट को। हाँ, ओके सर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट एंड आउटसाइडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। ओनर्स, चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना, इक्विटी मींस व्हाट? इक्विटी मींस, इन कमेंट सेक्शन राइट डाउन एवरीवन, in equity means owner's contribution and liability means outsider's contribution. So liability means what? That you have to pay him because he has given you something, that's why you are paying it back. Okay, it's called as liability. So liability is your obligation. What is the correct word? Obligation to pay. Obligation to pay is called as liability. And what is equity? Owner's contribution. Owner's contribution is called as equity. Chalo, okay. बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मदिया खान, रॉन्ग 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 बेटा, प्लीज 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 आगे मत जाइए। संकेत सर विल टेल यू बिकॉज सम wrong things in your mind I cannot remove from your mind. Okay, so please have some patience, try to grasp this concept slowly. So because preference shareholder is not a liability, he is owner of the business. Okay, he is also owner. What is the difference? That I will tell you. Wait for some time. Okay, let's understand it practically.
Very good. चलिए, मजा आ गया. I enjoyed your session with you, beta. Yes, I enjoyed. So owner's contribution means equity and liability means outsider's contribution. So outsider's contribution is liability, sir. Now what is shareholders fund? Shareholder. Now beta, owners in company act language, we cannot call him as owner. Okay, we call him as shareholder. Why? Because here there is no one owner. There are 1,000 owners. There are lakhs owners. Now, in Corona situation, every friend of mine who are engineers, do not having any knowledge of accounting, they invested in share market. शेयर मार्केट में पैसा बहुत था, पैसा तो मिल रहा था उनको, वेस्ट करने के लिए टाइम ही टाइम था, क्योंकि नीचे होटल में नहीं जाना था, इधर नहीं जाना था, कहां पे इन्वेस्ट किया. मैक्सिमम फ्रेंड्स हु आर इंजीनियर्स, दे इन्वेस्टेड इन दिस शेयर मार्केट. Okay, and share market mein they become owners of that company. Okay, they bought some shares. So now think positively. So suppose if I want to start a company, okay, I want 10 lakhs rupees. I want 10 lakhs rupees. Okay, chalo, hum log thoda accounting samajh lete hain. Understand it. Now 10 lakhs rupees. Can I call it from one person? No, sir. It is September. So 10 lakhs rupees I want. Now think how I can raise this money. I have option number one, 10 rupees ka one share, or I might be having option of rupees 100, or might be having an option of rupees 1000. Sir, it's like your dairy milk. Dairy milk, you can get it for 1 rupee, that one piece. मेरे टाइम पे था. नाउ आई एम रियली नॉट अवेयर अबाउट डेयरी मिल्क प्राइस. वो दक्ष खाता रहता है, बट मुझे अभी डेयरी मिल्क का प्राइस नहीं पता. ओके, सो 1 रुपी बेटा, 1 रुपी, 1 रुपी 1 चॉकलेट, डेयरी मिल्क 1 रुपी 1 चॉकलेट. सो सेकंड ऑप्शन दैट आई हैव, इट्स ऑफ 20 रुपीज. जरा स्मॉल पीसेस, थोड़ा साइज बड़ा होगा, बट इट इज ऑफ 20 रुपीज डेयरी मिल्क. सो आई मे हैव 1 शेयर ऑफ रुपी 1, or might be 1 share of rupee 10, or might be 1 share of rupee 1000. It is my decision. I have to see whether my shares are subscribed by public. Subscribe, sir, new word. Subscribe matlab sale karna, to sow, to sale. Sold my shares. I sold my shares. Okay. So subscribe matlab bechna in simple language. So subscribe is a company act word. And sale matlab simple word. So subscribe my share is rupees 10. Okay, I know I'm new in this business, so no one will take my share at rupees 100 rupees. Okay, so people will attract at rupee 1 or attract at rupees 10. So because suppose if it's a new Cadbury, okay, you do not trust directly on that Cadbury. First you will taste it. So that at rupee 1 मिला तो अच्छा है ना, directly 150 रुपया price रख दिया. If I put the price 150 for that Cadbury, no one will take without testing. फिर branding करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा branding, advertisement. Okay, so it's better. Now it's a company's option. Whose choice? 10, 100, 1000. It's a company's choice. So it is called as face value. Company has to register its capital with the ROC. Registrar of company के पास जाएगा. Registrar of company will ask them, sir, what is the face value? So they will tell, sir, 10 rupees is the face value of my company. Share, not company, share price. Okay, how many shares that you are going to now issue? So you have, so first word, it's my authorized capital. It is my authorized capital. I want to register my company. I want to register my company. I want
10 lakhs rupees. 10 lakhs is my authorized capital. Sir, how many shares you are going to issue? So I'm going to issue 1 lakh shares because it's a new company. So I decided 10 rupees is one share price. Sir, 100 चलेगा क्या? Yes, चलेगा. So 1000 अरे चलेगा ना भाई, क्यों प्रॉब्लम क्या है? कौन सा चलेगा? आपको मैं बोल रहा हूं ना चलेगा करके. If you are thinking that your share will be purchased at rupees 100, बेच दीजिए 100 रुपए में, क्या दिक्कत है? So कुछ भी शेयर प्राइस चलेगा. Okay, and that is called as face value. That is called as, so this is registered capital. This is called as registered capital. Registered with whom? Beta ROC. Who is ROC? ROC is a registrar of company. What they are doing? Beta they are taking ना, ये कहाँ पे आप जब पैदा हुए थे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको कॉर्पोरेशन वालों ने दिया ना. दैट कॉर्पोरेशन मतलब क्या? जिसने ठप्पा लगाया तो पैदा हुआ. आरओसी क्या करता है? आरओसी ठप्पा, आरओसी के पास इंफॉर्मेशन है कि ये कंपनी पैदा हुई मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस में आई. ओके, सो इट इज को रिलेटेड. बेटा कॉर्पोरेशन वाले देते हैं हमारा जन्म मरण का ये पूरा का पूरा रिपोर्ट, और कंपनी का आरओसी क्या करती है? आरओसी के पास इंफॉर्मेशन रहेगी, कंपनी जिंदा हुई, कंपनी बंद हुई, ये सब इंफॉर्मेशन यू विल गेट विद आरओसी. आरओसी मतलब क्या? हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. You have to register it somewhere, na, कि this company is in the existence. That is ROC, register of company. Think it properly. So ROC in Pune, we have ROC office near, yes, our bus stand of Deccan. So Deccan के यहाँ पे ROC office है. So everyone should know where is its ROC office in their city or near city में कहाँ पे ROC office है, ये पता होना चाहिए. Everyone, okay. So ROC is a registrar office where you have applied for this share certificate. आपने क्या किया? वहां पे शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया. सर आई वांट नॉट शेयर सर्टिफिकेट, सॉरी, आपने कंपनी फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया एंड यू रजिस्टर्ड योर कैपिटल. सो फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. हाँ, आरओसी प्रोवाइड्स कंपनीज बर्थ सर्टिफिकेट. वेरी गुड. कौन है ये? सार्थक सेठ. वेरी गुड बेटा, यू कैन कोरिलेट इट नाउ. Very good. So correlation, very very important. Correlate with these things. Yes, बेटा बर्थ सर्टिफिकेट बाय कॉर्पोरेशन करता है तो यहाँ पे आरओसी देता है in simple language. So authorized capital means 1 lakh shares you issued at rupees 10. So this is a maximum capital. Authorized capital is a maximum capital on beyond which you cannot issue your shares because you registered with that. Sir, if I want to change my shares, I want to extend my share, then you have to change in your memorandum of association. This is possible. बेटा लॉ में सब जगह पे लूप होल्स है. आपको करना है ना, आगे कीजिए. बट नाउ नो नीड ना बेटा. Why needs a new company? I want to start with 1 lakh shares. My maximum limit is 1 lakh shares. So this is called as authorized capital. It is a maximum limit. It is a maximum limit. And if I want to change it, yes, I can change it. I can change it. This maximum limit, I can change it, but then I have to make changes in memorandum of association. Now that is a big task. Okay. Then now I am not in need of 1 lakh shares immediate. I am in need of only 2 lakhs rupees. So if you are in need of only 2 lakhs rupees, sir, then now what is the option for me? Sir, first option is that 20,000 shares you issue at your face value. ये क्या होगा? 20,000 shares you issued at rupees 10 per share. Issued. So this is called as issued capital. You issued only 20,000 shares. How many shares? 20,000 shares. Got this concept. 20,000 shares, sir, I issued at rupees 10. Sir, is it mandatory issue at face value? No. It is not mandatory to issue at rupees 10 because shareholder is not concerned for your face value. Shareholder को क्या लेना देना है? You want 2 lakhs rupees.
You may issue at discount. Now it is not allowed. 9 rupees is not allowed. You may issue at rupees 25 per share, sir. Face value 10 and issue price is 25. Is it allowed? Yes, it is allowed. 10 rupees. If shareholder wants to take it at 25 rupees, it's okay. I am selling one pav bhaji at rupees 70 on road. And if I am selling one pav bhaji at 150 rupees in restaurant, same taste, but you are taking at 125 or 150 rupees. Why? Because you are sitting in the restaurant, not on the road. So रोड वाला 50 रुपए 60 रुपए में बेचने वाली पाव भाजी आप 150 रुपए में खरीदते ही हो. So if company is selling this share and company has brand, already they created brand. For example, CCD का था, पेटीएम वालों का था. They issued shares also. पहले प्राइवेट से स्टार्ट किया. Then they form in the company, LIC. If they want to sell these shares at rupees 25, they can. Why you are bothering about your face value? You can sell your share above face value. But wait. Now accountant role is getting changed. Accountant, now his role, 2 lakhs rupees is collected. So 2 lakhs divided by 25, how many shares he has to issue? Only 8,000 shares. To collect rupees 2 lakhs, rupees 25 per share. Rupees 25 per share, sir. Wait. Now out of 25, face value which you registered is rupees 10. And security premium is rupees 15. Security premium means what? Excess amount that you collected above face value. Write down this word somewhere. If you are not aware about these things. But what is the benefit? Company is getting 2 lakh rupees. Here also company is getting 2 lakhs rupees. Can you find out the difference? Can you tell me the difference? Company is ultimately getting 2 lakhs rupees. Then why to issue at issue price, sir? Can you tell me the difference? चलो कितना ध्यान है आप लोगों का समझ में आएगा? Tell me. So sir, 10 rupees I have option, 25 rupees also I have option, but I'm getting ultimately 2 lakhs rupees. Ultimately I'm getting 2 lakhs rupees, sir. Sir, why, sir? Then why there is a need to issue at security price, security premium pay? Issue price is more than face value. Okay, why? This is called as issue price. Issue price and face value might be different, might be same. If it is different, then security premium is added to that. Okay. Chalo. Fast. What is the difference? चलो जल्दी से बताइए. हाँ, सईद मजीद ने बताया. ओ बेटा, डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है. डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है. डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है. बट अरुण चौहान ने भी बताया. वाह. See beta, my maximum limit is 1 lakh shares. It is not given in any book. In books, it is given only shares are issued at security premium. But what is the use of security premium? That you'll understand now. Why shares are issued at premium? You can see, if I issued at face value, I can issue only, I will issue 20,000 shares. So in future, I'm getting a limit of 80,000 shares only. In future, maximum shares that I can issue 80,000 shares. But if I issue at issue price 25, I had issued 8,000 shares. In future, I will issue 92,000. Bracket open हो गई ना मेरी.
इन फ्यूचर 92,000 शेयर्स इशू कर सकता हूं, इधर 80,000 ही शेयर्स इशू कर सकता हूं। अरे लिमिट मिल गया ज्यादा, लिमिट ज्यादा मिल गया ना। सो दैट इज द बेनिफिट टू इशू शेयर एट maximum amount. No one will tell you this difference. In study material, it is not given. In law also, and in accounts also. So what is the benefit? अरे बेटा विंडो मिल गया ज्यादा का, 92,000 shares you can issue in the future. Here 80,000 shares you will issue in the future. So what is the benefit of this? You are getting more number of shares in the future. And that's why the benefit to issue at more than face value company is always in benefit. जिया पटेल बराबर छे बेटा, बराबर छे. Okay. In future, we are getting more number of shares. Write down it somewhere. It's not given in the study material. So what is the benefit? What do you have to write? So वो भी मुझे ही पूछेंगे आधे बच्चे, अरे सर क्या लिखना है? Issue 2 lakhs rupees you have to collect. So you have first option 20,000 into shares into 10. Second option 8,000 shares into 25. 8,000 shares in future 92,000 shares you can issue, and 20,000 shares के लिए in future 80,000 shares can be issued. मजा आ रहा है आपका? Are you enjoying? बड़ा नया नया समझ में आ रहा है. ओके. ए वंस अगेन यार, रौनक गर्ग एक बार हो गया, आकाशवाणी एक भी बार होगी. ठीक है, बार बार मैं इतना डिटेल में नहीं जाएगा. हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. सो पहला लिमिट क्या था? ऑथोराइज कैपिटल. कंपनी ऑथोराइज कैपिटल. ओके, ऑथोराइज कैपिटल means registered capital. Are you going to issue this? No, sir. Registered capital means maximum limit. It prescribes maximum limit beyond which you cannot issue shares. First one. So what is second one? Issued capital. In this, I told you two options: at face value or at face value plus excess amount. Excess amount is called as security premium. Security premium. So you can issue more than 10 rupees. Now third one, how many shares? So here you have first option that how many shares you issued? 2 lakhs चाहिए था ना? 2 lakhs चाहिए था. 20,000 into 10. And here 8,000 shares into 25. You have two options. I will prefer this option. Why? Because I'm getting extra limit. If shareholders are agreed, you think that your share might be subscribed at 25. So it might be more than face value. If you think no, थोड़ा कम price रखते, then 10 rupees is also okay. 10, 15, it's company's choice. It's company's decision. Then, beta, now it's time for taking shares by the public. पब्लिक क्या बोलता है बॉस? सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल मींस पब्लिक जो बोलेगा कितना शेयर्स खरीदेगा, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल मींस विच इज issued by company and taken by the public. Okay, so okay, so subscribe means what? Subscribe means 8,000 shares you issued and public ने पूरा subscribe कर लिया, fully subscribed. Sir, public has taken only 7,000 shares. Oh, only 7,000 shares. Undersubscribed. Undersubscribed. इसको क्या बोलेगा? Undersubscribed.
No, shares cannot be issued at discount as per new Companies Act. And if public has taken more shares, they are asked for more shares. हो सकता है ना भाई. चलो, आई थॉट कि मेरे 500 पेनड्राइव बेचे जाएंगे इन पुणे ब्रांच में, बट पब्लिक आस्क फॉर 800 पेन ड्राइव्स. ओके, सो बेटा 800, वी हैव ऑप्शन ऑफ ओनली 500 पेन ड्राइव्स, इतने ही है मेरे पास. देन दे आस्क फॉर 800 शेयर. सो बेटा ये क्या होएगा? ओवर सब्सक्राइब. ओवर इज ऑलवेज बेटर ना बेटा, ओवर सब्सक्राइब इज ऑलवेज बेटर. अंडर सब्सक्राइब, यस बेटा, अंडर सब्सक्राइब सैड चेहरा. अंडर सब्सक्राइब, ओवर हैप्पी, कंपनी इज हैप्पी. ओवर सब्सक्राइब, होटल की सीटिंग कैपेसिटी 100, लोग आ गए बाहर 150, अच्छा लगेगा ना मालिक को. हाँ, एंड अंडर सब्सक्राइब क्या होगा भाई? 100 कैपेसिटी और 20 लोग अंदर आए, ऐसा बुरा लगेगा. अंडर सब्सक्राइब. ओके, ठीक है. नाउ ओवर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्राइब, इफ ओनली 90% से लेस लोग सब्सक्राइब करते, कम मतलब अवर ऑप्शन इज 8,000 इंटू 7,200 इज 90%. इफ पीपल आस्क फॉर 6,000 शेयर्स, ओके, यू हैव गिवन सम डेट कि इतने दिन में आपको शेयर्स लेना है, पर लोगों ने लिया नहीं. 6,000 शेयर से लिया. कितना शेयर्स लिया? ओनली 6,000 शेयर्स. तो यू हैव टू रिफंड देयर मनी. सर व्हाई? दिस कंपनी एक्ट प्रोविजन इज नॉट टेलिंग बाय संकेत सर. ओके, और कंपनी एक्ट सेज कि 90% से कम आता है, 90% से कम आता है तो लोगों का रिफंड दे दो. सर इफ आई डोंट वांट टू रिफंड, एक्ट बोल रहा है भाई देना ही पड़ेगा. बट सर देन वी हैव एनी अदर 6,000 शेयर्स ही बेचे गए, सर बाकी का कोई लेने वाला है ना भाई? अपॉइंट अंडर राइटर्स. किसको अपॉइंट करो? अपॉइंट अंडर राइटर्स. सर अंडर राइटर्स, न्यू वर्ड्स सर, न्यू वर्ड्स. अंडर राइटर्स, heavy words. Underwriter is an agent, simple language, who takes responsibility to sell all shares, sir. Who takes responsibility to sell all shares. He is an underwriter. Sir, underwriter, what he will take? Commission. He will charge us commission. How much, sir? 2.5% in case of share, 5% in case of debentures. That is the agreement between him. That is the limit which is given by the Company Act, 2.5 and 5%. So underwriter is a person who is taking responsibility to sell under subscribed shares. But sir, if I have confidence that I will sell whole shares, don't appoint underwriter. Don't appoint underwriter if you think that you can sell all shares. But normally, company appoints underwriter. Sir, underwriter chapter we have, yes, at our intermediate level. Intermediate level, you have this option. Okay. Salesman. Very good. Very good. Salesman hai ye. Underwriters are brokers. Yes, sir. Underwriters are brokers. They take responsibility to sell shares. अरे भाई हिंदी में एक बार बताता हूं, अंडरराइटर मतलब ऐसा इंसान जो आपके शेयर्स जो है वो कम बेचे गए. मतलब कितना सर? 8,000 शेयर्स बेचने को निकाला. अरे बेटा 8,000 नहीं बेचा गया, 6,000 ही बेचा गया. सर 90% तो मिनिमम बेचना है. 7,200 नहीं बेचा, पब्लिक नहीं आया ना, तो पूरा पैसा रिफंड देने का. सर अभी क्या? मैं तो डर गया सर, मैं डर गया. 7,200 शेयर्स में तो कंपनी हूं, मैं तो डर गया, नहीं आया सर. 6,000 शेयर्स आए मेरे पास, अभी क्या रिफंड देने का? मुझे तो बिजनेस करना है सर. बिजनेस करना है तो क्या करेगा? मैं 7,200 शेयर्स मेरे नहीं बेचे गए तो मैं 3,000 शेयर्स के लिए अंडर 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है तो मैं अंडरराइटर को बुलाएगा. किसको बुलाएगा? अंडरराइटर. अंडरराइटर क्या करेगा? ऊपर का 2,000 शेयर्स बेच के लेगा, नहीं तो खुद ले लेगा, नहीं तो खुद ले लेगा. इसको बोलते अंडरराइटर. क्या बोलते इसको? अंडरराइटर. तो अंडरराइटर इज अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल ऑल दिस शेयर्स. समझ में आया ना बॉस? यस, एकदम अच्छे से समझ में आया. अंडरराइटर मतलब जो बंदा वो पूरे शेयर्स बेचने वाला है. नाउ सर व्हाट इज ओवर सब्सक्राइब? ओवर सब्सक्राइब मीन्स फिर अंडरराइटर की क्या जरूरत है भाई? फिर भी बुला लेने का सेफ्टी साइड के लिए. आपने को क्या भविष्य पता है क्या कि कितने शेयर्स बेचे जाएंगे? अच्छा है तो अच्छा, मुझे क्या पता कितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने वाले, पता है क्या मुझे? अभी तो मैं लेके चलो 150-200 स्टूडेंट्स देख रहे, पर बाद में देखने वाले बच्चे और बढ़ने वाले. तो ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. ओके, सो ओवर सब्सक्रिप्शन, अभी उसमें और मजा आएगा.
और मजा आएगा. मोर एप्लीकेशन. अंडर राइटर के बाद अभी ओवर सब्सक्रिप्शन, लाइन बाय लाइन जा रहा है, पूरा कोरिलेट करके देगा मैं आपको. ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? ओवर सब्सक्रिप्शन सर, ओवर सब्सक्रिप्शन 8,000 शेयर्स थे. वो था ना शोले का डायलॉग. कितने आदमी थे? 3 आदमी. गोलियां कितनी? 2. और 2 गोलियों में 3 आदमी को मारना है. बहुत मजा आएगा. ओवर सब्सक्राइब. 8,000 शेयर्स. 8,000 shares and applied by 10,000 shareholders, applicants. Applied by applicants 10,000 and shares 8,000. So now what to do? Confusion. Oh, 10,000 shares applied for only applied for 10,000 and there are 8,000 shares. So now we have to see it after break. 10 minutes break and we will come back for oversubscription. Till that time, you have to understand, you have to think what is the option for oversubscription. You can write it in the comment section. So till that, yes, I'm leaving you here. Till subscribe, fully subscribe over, under subscribe over and over subscribe. जितने भी बच्चे मैक्सिमम लेक्चर को स्प्रेड करेंगे, लाइक बटन ज्यादा से ज्यादा प्रेस करेंगे. चलो, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, स्मॉल एडवर्टाइजमेंट. चलो जल्दी से जल्दी आपको फटाफट फटाफट ये मुझे लिख के भेजना है. इन केस ऑफ ओवर सब्सक्राइब इन ब्रेक, सो टेक अ ब्रेक ऑफ, वी आर गोइंग टू मीट एट 12:21. सो थैंक यू फॉर दिस सेशन. यस.
So I ask you for the over subscription. Now, how many options you have? Yes, many students have written. अरे वाह, सब लोग लॉ के जानकार है. मैं क्यों ले रहा हूं, ये सब स्टूडेंट्स तो जानकार है, फिर भी मेरे से सुनना है क्या आपको? ओके, लॉ के सब जानकार, मैं तो ऐसे ही स्टोरीज बना रहा हूं. यस, थैंक यू बेटा पंकज मेहता. ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स, यस बेटा जया कुमारी जी, आई कैन सी यूर कमेंट्स. वेरी गुड. चलो, ओवर सब्सक्रिप्शन में यू हैव 3 ऑप्शंस. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. Option number 1 is that I will tell that 2000 shares. Randomly, I will pick these 8000 shares by my lottery process. Okay, so I will see randomly, I will collect 8000 shares. And after that, those who are not getting these shares, okay, names, applicants will not get shares. So I will reject 2000 applicants form, application form. I will reject it. So option number 1, reject 2000 shares. Okay. But if you are already aware about all these things, then should I directly jump to problem part, or you want to learn this theory in my way? Yes, tell me it in the comment section. All, if you already aware about all these things, authorize, issued, subscribe, then paid up. So beta, then there is no need to take all these questions. So reject 2000 shares. Reject 2000 shares. Option number 2. Now suppose I have 4 chocolates. I have 4 chocolates. Option number 1. Thus, beta, my official child, he asked for 4 chocolates. Papa, give me 4 chocolates. So I will tell, yes beta, ये तेरी chocolate मैंने तेरे लिए ही लाए थे. But at the same time, Anvi, my sister's daughter, she comes to my place and she saw that Daksh is getting 4 chocolates. So she is also demanding, Mama, please give me 2 chocolates and 2 chocolates to Daksh. So Daksh asked for 4 chocolates, but I told him, beta, Daksh, you will get only 2 chocolates. Why? Because Anvi also wants chocolates. So I'm giving 2 chocolates to Anvi. So application for 4 chocolates, but at the same time, I'm giving only, so beta, both will be happy. Both will be happy. So those who are applying for 4 shares, I will give only 2 shares. So this is called as pro rata. What is called as pro rata? Okay, pro rata means giving 4 chocolates को application for 4 chocolates, application for 4 chocolates, applied for 4 chocolates, but giving only 2 chocolates, allotment of 2 shares. Sir, got this concept? Easy che? Yes. %90 students ask for explanation of theory and 10% students are asking directly to problem part. So beta, I will go with 90% students. Okay. So 4 chocolates applied, I have given only 2 chocolates. To Daksh also and Anvi also. Both are satisfied. Okay. So सबको खुश रखना, ये किसका काम है? प्रो राटा. और दूसरा, मैंने बोला नहीं दक्ष, अनवी एक ही बार आई है तो अनवी को पूरे 4 चॉकलेट्स मिलेंगे, दक्ष तुझे नहीं मिलेंगे. रिजेक्शन. पर रिजेक्शन में दक्ष नाराज हो जाएगा. सो रिजेक्शन से अच्छा
pro rata. So to make everyone happy. Okay. So that is pro rata and combination. Some shares are rejected and some shares are given 3 shares go 2 shares. So this is called as combination. All 3 shares are rejected. Some shareholders ke and some shareholder is getting 3 shares go 2 shares. So combination. Very easy. Very easy way बेटा. चलिए सब्सक्राइब तो हो गया. अंडर सब्सक्राइब अंडर राइटर. इफ यू वांट 90% शेयर से कम आए तो रिफंड दैट मनी. फुल्ली सब्सक्राइब नो प्रॉब्लम. मांगने वाले भी 8,000 देने वाला भी 8,000. सो इट इज बेटा इट इज ओनली ऑन बुक कॉन्सेप्ट. फुल्ली सब्सक्राइब. इन रियल लाइफ आइदर अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब. 4 times or oversubscribed हुआ. 4 times means what? You have 1 lakh shares to issue and you are getting application of 4 lakh shares. It is called as oversubscribed. So this is day-to-day language of company account. In company accounts, we have slightly different language. It's not like your sole proprietor accounting and partnership. Partnership आया तो क्या दिमाग में आता? So goodwill adjustment. So interest on capital, interest on loan, partners capital, all these words in partnership. All these words in partnership. In company accounts, shares मतलब क्या? अरे वही छोटे 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 shares. Call for. Now you understood it. Shares means nothing but 10 rupees is a face value. So what are new words in company account? Face value. Face value means which you registered with your company. कंपनी के साथ जो रजिस्टर किया. एक ही सेकंड ना बेटा, एक ही सेकंड. आप तब तक ये याद करो, एक ही सेकंड. Okay, sorry. So shares is a new word. Shares is a new word. Issued capital means number of shares that you are going to issue is called as issued capital. Then subscribe capital means public ने क्या लिया is called as subscribe capital. नंबर 4. नंबर 4 पे है paid up capital. So now you understood beta, these words are very important. Shares, then authorized, then subscribe, then issued, then subscribe. These words are very important. Okay. Paid up capital means what? Sorry, before paid up capital, we have called up capital. Called up. See beta, 1 share is of 25. 1 share is of 25. Yes, issue price is 25. You got this concept. 25 is a issue price. But I will not call this amount immediately. I won't call 25 in one stroke because I'm not in need of 25 immediately. Simple. Simple. Okay. Sir, called up capital is divided in 4 parts. Okay. Some capital is called up, some is not called up. I called only application. So at the time of application, when you are making application, you have to pay me some amount. If you are applying for the share, first give me money. Though I'm not giving you share. See beta, see the controversy over here. You have to pay me application money. But your destiny will decide whether you will get the share or not. I don't know exactly. I'm a company. You apply for the share. Suppose if my private placement, now what is a private placement? They are arranging this issue. Okay. They will decide to whom shares are given and to whom shares are not given. Okay. There is one separate body. अरे भाई हमारा काम है बिजनेस करना, उनको करने दो ना. वो शेयर्स वाले लोग रहेंगे अलग से. दे विल डिसाइड, वो करते रहेंगे, उनका एक प्राइवेट प्लेसमेंट रहेगा. हम लोग किसी को अपॉइंट कर लेंगे. भाई इतना ही काम है क्या, हमें बिजनेस करना है.
मैं बिजनेस करूं या लोगों को शेयर्स देते बैठूं, मेरा काम क्या है, पढ़ाना है। बाकी का जो है, बाकी लोग हमारा कब लेक्चर रखना है, क्या करना है, ये डिसाइड करती है हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज की बॉडी, जो भी हमारे सीएस पीपल ही है वहां पे। हमारा काम, वो हमें क्या करते, इतने बजे आके सर लेक्चर लेना है। सो सिमिलरली मेरा काम है बिजनेस करना, और वो शेयर्स किसको देना है, क्या देना है, वो एक पार्टी रखने दो ना सेपरेटली, दैट पार्टी इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। दैट पार्टी इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। सो हियर व्हाट दे विल डिमांड, दे विल टेल यू एज अ पब्लिक को क्या बोला जाएगा, यू पे फर्स्ट, देन इट इज योर डेस्टिनी दैट यू विल गेट दिस शेयर और नॉट, वी वोंट डिसाइड इट नाउ। ओके, लॉटरी लगाया जाएगा, हम लोग डिसाइड करेंगे किसको शेयर्स मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, सो एप्लीकेशन is of rupees 10. How much is application amount? If of rupees 10. How much? नहीं 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 नहीं, अभी देखो, सी now 25 में से face value is 10 ना, and security premium is 15 rupees. In our example, security premium is extra 15 rupees. Okay sir, okay, got this concept. Application के time पे you called 5 rupees. At the time of application, you called 5 rupees. Okay, sir. 5 rupees you called. Now my private placement, that separate person, that body who is issuing shares, they decided to allot shares. Okay, sir. Allotment. Allotment means to give shares. First you will apply, then I will allot. I'm a company. Think you are a shareholder. I'm a company. You will ask for shares, then I will allot you shares. You will first apply, I will then allot. So application first and then allotment. Write down in the comment section. What is first and what is second one? Yes, beta. Jaldi se bataiye. What is first? As a company, I am getting first application. First, I am getting application. रियल लाइफ में फुल्ली पेड आता है बेटा, यस, रियल लाइफ में पूरा का पूरा एक साथ बेड़ा जाता है, बट इन practical life, in theoretical life, yes beta, we have to divide this. Okay, from theory point of view we have to divide this, from example point of view. So application I'm getting 5 rupees, in allotment I'm getting full security premium also. So 3 plus 15, how much I'm getting in the allotment? 18 rupees. 3 towards face value, 3 towards face value, and 2 towards 15 rupees towards security premium. So allotment money is of rupees 18. And call, and then I will call after that. It might be first call, second call, third call, fourth call. So after allotment, remaining money is in the call amount. Okay, so this is my final call. I'm calling for last final call in my situation, 2 rupees. You can check 5 plus 3 plus 2, 10 rupees is a face value, and 15 rupees is collected at the time of allotment. So at allotment mein maine security premium collect kiya. So when security premium is collected at the time of allotment, you can collect it at the time of application, you can collect it at the time of allotment. So you have a choice. As a company, you will decide when to record this 15. It might be in allotment. ये 15 रुपया कब कलेक्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना है. अलॉटमेंट में बोलना है या कॉल अमाउंट में बोलना है या एप्लीकेशन, यू हैव चॉइस, आपको चॉइस है. आप ऐसा भी बोल सकते हो, 5 इधर 5 इधर 5 इधर. So it's your choice how you are going to record this, because security premium is recorded separately and face value is recorded separately. Now come to accounting point of view. Called up amount. Okay, so my share till now I called only, assume I called 15 plus 3 plus 5, I called 23 rupees. And call amount still 1 rupee, 2 rupees. I have not asked for the final call. So this is uncalled amount. I called only 2 rupees, sir. I called only 2 rupees. So this is called as final call. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Final call. Final call मतलब अभी भी पैसा आना बाकी है. So security premium can be called as goodwill? No, beta. हाँ, due to your goodwill, you are getting excess amount. Yes, you can call it in this way. Due to your goodwill, you can call it as, yes. Very good. Very good. ऐसा एकदम आप लोग फुल आंसर्स देते हो. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया.
So how I collected money? 5 rupees in application, 3 rupees in allotment plus 15 rupees towards security premium. See, face value का accounting is different and security premium का accounting अलग होगा. Different accounting for face value and security premium. So many students are not getting. So face value is different, security premium is different. Yes, accounting point of view, it is different. Face value is rupees 10. When you collected 5 rupees at the time of application, 3 rupees at the time of allotment, and then 2 rupees at the time of call amount. And so what about security premium, sir? Security premium you collected at the time of allotment. Here in our example, total share price is rupees 25 and this 15 we directly collected at the time of allotment. Sir, can I collect it at the time of application? Yes, it is a choice of company, how they want to call this amount. It is a choice of company. Sir, whether in exam it is given, yes, beta, in exam में तो दिया रहेगा. In real life, yes, you have to collect full 25 rupees. In real life ऐसा नहीं होता. Application allotment first call पूरा का पूरा एक साथ ही पैसा मंगवा लेते हैं. पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही मंगवा लेते हैं. ये थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशन हुआ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड. यस बेटा, हिस्ट्री हमने पढ़ा है ना, तो हिस्ट्री में ये सब होता था. अभी हिस्ट्री अभी और अभी का हिस्ट्री में जो चल रहा था वही हम लोग घोड़े पे युद्ध करते हैं क्या, वॉर करते हैं क्या? नहीं, पर अपने को सिखाया जाता है कि घोड़े पे ही अभी तक युद्ध किया था. अच्छा, फिर हम लोग वो बाहुबली में देखते हैं. अभी रियल लाइफ में ऐसा होगा क्या? रशिया वाले घोड़े पे जाके वहां पे इनको एक साथ युद्ध किया क्या उन्होंने? नो. सो बट स्टिल वी मस्ट नो द हिस्ट्री. Application, allotment, final call from accounting point of view. Yes, any company wants to raise money in this format, so they can. सब पूरा का पूरा एप्लीकेशन में लिया तो चलेगा, no problem. Yes, beta. Ekta Tiwari. Now, if you are questioning this application, allotment and final call, I am waiting for your questions. If you are clear with this concept, so you can write, sir, clear with this concept. So tell me, security premium सिर्फ allotment में collect होगा क्या? या it is a company's choice how they want to raise this money? Yes, जल्दी से बताइए. Sir, why to collect premium? Security premium? बेटा collect करना पड़ेगा ना. 25 rupees you are asking for the shareholder. तो 25 रुपया कलेक्ट करना पड़ेगा. एंड वाई? तो इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है. Srinidhi, I already told you the answer. Why security premium is collected? Not to exhaust the limit. Okay. So authorized capital ko you are getting limit of 92,000. Yes. Saeed Majid, अरे क्या लिख रहे हैं भाई? Saeed Majid, you have to understand. Security premium is a company choice, beta. Wherever they want to collect. In our example, we collected it at the time of allotment. This 15 rupees can be collected. Application में 5, allotment में 5, and first call में, final call में 5. It is also choice. Application में 10, allotment में 5. Okay. Total in final call. Okay. Everything is allowed. How to collect money is company's choice. Ah. Yes. Now accounting. Let's understand the accounting. Chalo, accounting dekhte hain abhi. So now I will tell you how to do accounting for this. 5, 4, 3, तो 4 नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया. 5, 3, 4, 3, 2, 1 लिखता हूं मैं. 4, 3, 2, 1 face value. First we will try to understand face value concept, then security premium. नहीं तो चलो security premium भी इसी में ले लेता हूं. It will save my time. 1. Now understand this accounting. See, Sanket sir is telling you always think for one share. Always think for one share. Arshdeep, nothing is refundable to shareholders. Nothing, because they are owners. So here, no single amount is refundable if you are getting share. If you are applied, but you are not getting share, then it is refundable. Then application money is refundable, only in that case. Otherwise, once you got the share and you ask for the refund, bhai company हाथ जोड़ेगी. You are owner को कोई हक नहीं है. So this is the difference between ownership and liability. You cannot ask for refund. Once we invested, we cannot ask for refund.
We cannot ask for refund because we are owners. ये मेरी गलती है, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो ये इसका जो भी नतीजा होगा ये मुझे भुगतना पड़ेगा, ना कि कंपनी को भुगतना पड़ेगा। रिफंड नहीं मिलेगा यदि मैंने इन्वेस्ट किया है। ओके, सो still you have some question, you can ask me, otherwise I will move to accounting part now. Shares are not issued at discount. Kotla Shirisha Kotla madam, I am telling you, shares cannot be issued at discount. 10 का शेयर 9 में नहीं होता है. If you studied it in your HSC 12th standard में, तो it is totally wrong. It is not allowed. Yes, हर्षा जी, अंडरराइटर का काम अलग है. और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी. सर, इज देयर एनी लिमिट ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम? नो बेटा, देयर इज नो लिमिट. Security premium might be 500%. It's also 1 rupee का share. You can issue at 500 rupees. Yes, 499 will be in security premium. if public को प्रॉब्लम नहीं तो तुझे और मुझे क्यों प्रॉब्लम है? Till now everything is clear बेटा. और कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज टेल मी, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिख दो सर क्लियर, सर क्लियर, सर क्लियर, सर. री इशू तक मत पहुंच रहे. एकता रुकना जरा, आधे अधूरे, अभी लाइन बाय लाइन जा रहा हूं ना मैं. री इशू पे क्यों पहुंच गई? रुको, सबर करो. री इशू पे क्यों पहुंचना है तुझे तुरंत? थोड़ा थोड़ा बेटा प्लीज, थोड़ा पेशेंस रखिए यार, सीए कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस. री इशू पे आ गई है. और कोई डाउट्स? Yes, beta. Application money, Lakshita, you have to collect it from the public, from applicant. Sir, can you want the whole money in the application? If company wants, they can. Bhargavi, Bhargavi, Bhargavi. Very good, beta. Sir, if no information is given about the security premium, no beta, information is given for the security premium. Don't worry. Security premium के बारे में केशव ठाकुर वो लोग दे देंगे आपको कब पैसा लेना है. Ranjit Singh, your teaching is really amazing. Thank you, beta. पुतला शीर्षक क्लियर क्लियर क्लियर. बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए क्या सर? यस बेटा, वो तो करेंगे ना. रुको रुको, सबर करो. वापस बैलेंस शीट का फॉर्मेट लास्ट 10 मिनट में बताएगा मैं. ओके. और कुछ शक या सवाल? या शुड आई नाउ कंटिन्यू? नाउ कंटिन्यूएशन. व्हाट इट कॉल्ड एज बेटा? एप्लीकेशन. इसको क्या बुलाते हैं? अलॉटमेंट. इसको क्या बुलाते हैं सर? फर्स्ट कॉल. एंड लास्ट वन इज अ सेकंड एंड फाइनल कॉल. सेकंड एंड फाइनल कॉल. ओके. चलिए, साहिल पूछ रहा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब क्या? बेटा, कंटिन्यूअसली कंपनी चलती रहेगी सालों के साल. परपेचुअल, परपेचुअल मतलब चलते रहना, सालों के साल चलते रहना, इसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस. ओके. नाउ प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड accounting point of view. In application amount, you collected 4 rupees. What is important? First, you will get the money from applicant, and then you issue shares. So first entry, first you will collect for the amount. Bank account debit to equity share एप्लीकेशन. सर, बैंक अकाउंट को डेबिट देने का और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करने का. सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? सर, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट. इट्स अ टेम्पररी अकाउंट. Equity share application. Why? Because we must know from which source we have collected this amount. So equity share application, 4 rupees, 4 rupees. So here
amount is received. It is called as being amount received. And second entry, equity share application account debit, 4 rupees. Your capital will get increased to equity share capital. Sir, why the word is equity? Equity is called as they are owners of the company. When the word is equity, it means they are owners of the equity. Sir, what about preferential? Wait for some time. What is preferential? Wait for some time. Equity word means ownership. It indicates ownership. Only capital, sole proprietor. Partners capital, partnership. Equity share capital, it indicates it's a company. So whenever the word is equity share capital, it indicates it's a company. And in company, they are not a single owner. There are equitable owners, equal owners, according to their shares, whatever shares held by them. And therefore, the word is called as equity. Equitable. कहां से आया? Equitable. जितने शेयर से उतना पैसा. Okay, so it is called as equity. Equity, it indicates ownership. वही एंट्री जो सीपीटी से पढ़ते आ रहे फाउंडेशन से, सॉरी 11-12 से, बैंक टू कैपिटल. But ultimately here, temporary account is open. And what is the narration? Equity shares due. Application money due. What is called as application money? Application money due. When due, then equity share capital account is open. And when received, bank account is open. Which account is a temporary one? Application. Credit bhi hua, debit bhi hua. So balance is 0. And bank account. Now, if you open this balance sheet on asset side, now this is not the correct balance sheet presentation. Huh? This is only for your understanding. And this is liability side. In liability side, what you are going to write? Equity share capital 4, because it is showing credit balance, liability showing credit balance, and bank is showing on the asset side 4, your balance sheet tally. Your balance sheet. So this impacts on your balance sheet. In company accounts, we do not have to see P&L account. We will directly focus on balance sheet. तो बैलेंस शीट पे फोकस कीजिए, याद कीजिए कैसे दिखेगी तुम्हारी बैलेंस शीट, ये आपको याद करना है. बैंक अकाउंट 4 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. Got this concept? So first, in case of application, first is received and then it is due. First is received, then it is due. Second end. Let's focus on second end. Second entry, equity share allotment. Now, once you applied for share, now it's my duty to give you share and ask for further money. Now I will ask you money. Asking money means first due and then you will receive. So here, first entry for due and then second entry for receive. So here entry is bank, sorry, not bank, first due entry, equity share allotment. किसमें से पैसा आएगा? Allotment से पैसा आएगा, capital में जाएगा. So capital will get increased. Capital has a credit balance, and from allotment you are going to receive this money. How much? 4 rupees. Allotment पूरा 4 है. But remember one secret. Capital is always shown by face value. So yes, retain this sentence. Capital is always shown by face value. Capital is always shown by, write it in the comment section. Capital is always shown by face value. Write down in the comment section. Capital is always shown by
face value. Capital is always recorded at face value. Capital is always recorded at face value. So what is the face value? To equity share capital 3, and then excess money you collected, it is called as security premium. Security premium 1. So here, what is the transaction? Allotment due. Allotment money due. And what is second transaction, beta? What is second one? You received money. So bank account debit to equity share allotment. It is 4-4. Allotment will get cancelled. Allotment will get cancelled. And now see the balance sheet. Already you collected 4 rupees. In that you will add one more 4 rupees. 4 plus 4. So it is 8. Already 4. Now 3 plus 1, 4. So 8 rupees. And equity share capital application का 4, pre-allotment. So application and allotment will be recorded at 7, 4 plus 3. And security premium will be recorded rupee 1. And this is shown, the security premium is shown under the head reserves and surplus separately. Now, what is reserves and surplus? We will try to understand balance sheet at the end. You will understand it quickly. So see, just write down under reserves and surplus separately. Balance sheet tallies at 8 rupees, 8 rupees. So previous 4, now 3. Allotment का 4, allotment का 3, application का 4. तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हुई. Equity share allotment 4, to equity share capital 3, to security premium 1, first due entry and then received entry, bank to allotment. Allotment is a temporary account and that is getting cancelled. और liability side पे जाएगा 3 in capital and 1 in security premium. Reserves and surplus में 1 rupee जाएगा, which is shown under the head reserves and surplus security premium. Capital is always shown at face value. Capital is always shown at face value. Can you do accounting for first call beta now for 1 share? Are you enjoying? Yes, beta. Yes, I know you are enjoying. So do the accounting for first call now. Now first call is you have to tell me whether due first or received first. But obvious, we will call for the amount. First we will call. Call means due. And then received. Then call it. First call. Waiting for your answer. Both entries. First call beta. First call. Due plus received. So only application is first received and then due. Yes, beta. Swatigiri, I will give you time to take screenshot. Wait for some time. First we will finish this and then we will take the screenshot. Aha. Bhargavi छा गई बेटा, छा गई. भार्गवी ने इमीडिएटली लिखा रे. भार्गवी सब लिख दिया भार्गवी ने. Very good, Bhargavi. Very good. Always think for 1 share. Always think for 1 share. Sanket Sas Panda, always think for 1 share. Shares को पढ़ना है तो always think for 1 share. संकलदीप ने एग्जैक्टली उल्टा एंट्री लिखा. बेटा संकलदीप क्यों ऐसे एंट्री गलत लिखता है बेटा? Is this amount is transferred to security premium? हो. Yes. संकल्प क्या रे बेटा? इतना संकल्पदीप ने सिखाने के बाद भी तू ऐसे एंट्री करेगा तो? केशव ठाकुर गलत एंट्री. गलत एंट्री मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को पिक्चर में नहीं लाया तूने. एकता तिवारी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. रुचि पांड्या गलत एंट्री, हाफ एंट्री करेक्ट. अरे बुरा एंट्री करने का रुचि पांड्या. चलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 to equity share capital. Sorry, it's 3 to equity share capital 2. अरे पूरा पैसा मांगा ना. So first call is of 3.
and security premium 1 છે રે, security premium 1 છે. Okay, and second entry, bank account debit 333 to first call 3 છે, cancel 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 cancel. Now you can check in balance sheet. Equity share capital already 7 plus 2, 9 rupees, always face value. And security premium already 1 rupee and now 1 rupee. So security premium 2. In bank account 8 plus 3, 11, tally. 11 tally. Okay. So balance sheet. Now security premium में 2 रुपया दिखेगा. कितना दिखेगा भाई? 2 रुपया. And last entry, final call. Equity share second call account debit 1 to equity share capital 1. Equity share second call account debit 1 to equity share capital 1 and bank account debit. So बैंक में जाएगा 12, second call cancel. Equity share capital में 9 plus 1, 10 and security premium में जो पहला ही है वही दिखेगा 12 we collected 12 रुपया. Okay, now you can take a screenshot. Chalo. All entries together. हाँ. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. अरे अरुण चौहान, ये किसके एंगल से कर रहे हैं हम लोग एंट्रीज? कंपनी के एंगल से कर रहे हैं ना, क्या इन्वेस्टर के एंगल से कर रहे हैं? कुछ भी बोलता है यार. पैसा कौन मिलेगा? किसको मिलेगा पैसा? कंपनी को पैसा मिलेगा ना, शेयर होल्डर से जाएगा पैसा. वी आर थिंकिंग फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. ये कौन सा बेहुदा क्वेश्चन हुआ? चलो कोई बात नहीं, आने दीजिए ऐसे क्वेश्चंस. कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू बेटा. जूम इट. चलो जूम कर देता हूं. एप्लीकेशन का जूम, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का जूम करके दिखाया. ओके, एंड फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जूम करके बताया. What this बेटा? Yes. ठीक है. So till now, I don't think you have any problem. So this is authorized capital, issued capital, called up capital, and I already told you all entries regarding this. So till now, authorized capital is issued by 1 lakh shares into 10 rupees. 10 rupees is a face value, which is a registered capital. Out of that, then issued capital 8,000 shares. But it's my choice whether I will issue my share at 10 rupees, that is only at face value, or more than face value. So face value say excess amount will be recorded in. You can see here it is in the security premium account. Security premium is shown under the head reserves and surplus, and bank account को आपको दिखेगा 11 rupees. Then 12 rupees here. And it is my choice in this question. It is a total 12 rupees. Out of that, 2 rupees is a security premium and 10 rupees is a face value. So till now, no question till now बेटा. So आपको मुझे आपको आंखों के सामने क्या आना चाहिए? What you have to visualize? Number one,
equity share capital is always recorded at face value. So that is 10 rupees. And excess amount you will record under the head reserves and surplus security premium. And that security premium ka use kya hai, that I will tell you it in the next session. But before that, yes, I will tell you the balance sheet pro forma. Now you are clear with the concept of application, allotment, first call and second call. So called up is a till now. What is the called up? So beta, suppose if I called only up to 8 rupees. So out of this, beta, called up ke baad 2 rupees is uncalled. 2 rupees is uncalled. And after that, paid up capital. Last one is a paid up capital. Paid up capital means 8,000 shares. They paid full 8 rupees. They paid 8 rupees full, including allotment. But 2,000 shares, they paid only 6 rupees. So, beta, paid up is 2 rupees. It's still not paid. And 2 rupees still not paid. It is called as calls in arrears. It is called as calls in arrears. What is called as calls in arrears? So 2,000 into 2 rupees is not yet paid. 4,000 is called as calls in arrears. And what about calls in arrears? Now, how to take action against calls in arrears? That we are going to see it in the next session. That is forfeiture. Forfeiture is the next concept that I'm going to explain in the next session. So till now, calls in arrears. So बेटा सबसे पहले आता है authorized capital. Authorized capital के नीचे आएगा issued capital. Issued capital के नीचे आएगा subscribed capital. Subscribed capital में there are 3 ways. One is fully subscribed, under subscribed and over subscribed. Under subscribed हुआ तो underwriter को बुला लीजिए. Over subscribed हुआ तो there are again 3 options. Number 1 reject, pro rata or refund. And after that called up amount. Called up amount के बारे में मैंने बता दिया. Application money first received then due. Then allotment money first due then received. First call due received and then second call due received. First entry for application will be bank account debit to equity share application. Equity share application account debit to equity share capital. Second allotment money due. So equity share allotment account debit to equity share capital and then bank account debit to equity share allotment. Suppose there is a security premium, then equity share allotment account debit to equity share capital to security premium and bank account debit to equity share allotment. In case of first call, equity share first call account debit to equity share capital, and suppose if a security premium is there, so 2 security premium and then bank account debit to first call, and last entry will be equity share second call account debit to equity share capital and bank account debit to equity share second call. Very, very easy. And suppose if paid amount is only out of 8, only 6 rupees is paid, then 2 rupees is called as calls in arrears. And what is the action on calls in arrears is a next session lecture. तो बेटा यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका है. कोई भी गलती आपसे उम्मीद नहीं है मुझे. आप अभी तक का पूरा सेशन अच्छे से आपको समझ में आया है. तो मैं बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा अभी रटवाने जा रहा हूं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा. यस बेटा टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. विथ लॉजिक समझ में आया? Corlin core. Whenever I'm taking a revision, I will be very fast. And suppose you are not getting my speed of revision, means your concepts are not yet clear. Rewatch this session and then वो लास्ट के जो 2 मिनट में मैं बोलता हूं ना, वो स्पीड आपको मैच करने की जरूरत है. और वो स्पीड मैच कर लिया तो समझ लो आपको पूरा टॉपिक समझ में आया. यस 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 बेटा मेरा स्पीड मैच किया क्या? रिवीजन का स्पीड कितने लोगों ने मैच किया? चलो जल्दी से बताओ. यस सर आई मैच दिस स्पीड इन कमेंट सेक्शन. जल्दी से बताओ सर मैंने स्पीड मैच कर लिया. स्लोली बताया यार. पूरा रिवीजन तो फास्ट लेने दो गोरलिन कोर. इतना भी फास्ट नहीं बोलता हूं मैं, फास्ट बोलता हूं. यस एक तो इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स मेरे पास है, उसमें से मैं आपको इतना आसान करके बताने की कोशिश करता हूं. ओ वेरी गुड. चलिए नाउ स्पीड तो मैच करना ही पड़ेगा बॉस. इक्विटी एंड लायबिलिटी. चलो फास्ट वन, फास्ट फास्ट फास्ट.
First one is a share capital. Share capital means what you invested. It is always recorded at. You can write over there. It is always recorded at face value. See the presentation of balance sheet. In company accounts, it's in very detailed balance sheet. Schedule 3, part 1. Part 1 is a balance sheet pro forma. Share capital and reserves and surplus. Reserves and surplus is nothing but there are two types of reserve. One is specific reserve and second one is a free reserve. Specific means this reserve you have to use for that specific purpose. Specific purpose means you cannot pay shareholders this amount. Ultimately, reserves kiska hai? Reserves are belonging to owners. Reserves means what? Reserves means appropriation of profits. Appropriation. Profits ka distribution. Profits ka distribution. And some reserves are directly collected by the company. Directly collection by company. Some are appropriation. If you are in profit, then you will distribute it. It is called as reserves. Or in reserves and surplus, now security premium is not appropriation of profit. It is collected directly by the company. Security premium. General reserve is appropriation of profit. Is appropriation of profit. Free reserves and specific reserves. Now, what is the basic difference? Free reserves are available for dividend. Now, please, last 5 to 10 minutes, please have patience. Please have patience. Now, very, very important point I'm talking about, because many students, they are not getting what is reserves and surplus. Let's understand it quickly. Reserves and surplus. Understand. Reserves and surplus is normally it is appropriation of profit or some reserves and surplus, they are directly collected by company. Example, general reserve. First, company will earn some profit. Understand this concept carefully. Very, very important concept. Please mark it. General reserve. Now, what is the appropriation of profit? Understand it. And collection by company is a security premium. Then again, I will divide this. For example, company has some income, P&L account, expenses, they got net profit. Now, in sole proprietorship, this net profit is directly added to capital account. हम लोग कहां पे ऐड करते थे? कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ऐड करते थे. अंडरस्टैंड इट. पार्टनरशिप में भी वही करते थे सर. Directly added in capital account. Directly added in capital account. Okay. Now, suppose if I'm getting 2 lakhs rupees net profit. Now, what will happen? Now, think positively. Okay. Net profit, you got 2 lakhs rupees. Now, shareholder will see how much you earned. Company means management, how much you earned? 2 lakhs rupees. This is our profit. इन्वेस्टर वहां पे आएगा. इन्वेस्टर बोलेगा 2 लाख मेरा है 2 लाख. 2 lakhs rupees मेरा है. Now management will tell, sir, you want that profit? No problem. But understand, in future we might be in losses. So I cannot pay you this 2 lakhs rupees immediately. I cannot pay you. See these sentences, huh? Please understand these sentences. 2 lakhs rupees, I cannot pay you immediately. Sir, why? Sir, in future, we want to expand our business. Might be we will be in losses in the future. So how you can withdraw this 2 lakhs immediately? Sir, it is yours.
This amount is yours, but I cannot distribute it. Oh, shareholder will tell, yes, you are correct. ये कौन नेट प्रॉफिट कौन कमा के दिया? मैनेजमेंट. ड्यू टू मैनेजमेंट efforts, we are only investors. We are not going in the participation of day-to-day profits. So management has helped us to earn this money. Now management has to decide. Board of directors has to decide whether this money is totally distributed or not to distribute. Now management is telling, sir, we want to develop some asset in future. We want to develop our company. So I will not pay you it immediately. Out of this, I'm going to make an investment in the future. So for investment, I need 50,000 rupees. So why should I pay it now to you? So investment reserves 50,000. Sir, we want to take one land. We want to do some investment is different, that building mein. So we want to expand it in the Himachal Pradesh. Our business is in Maharashtra, but there is one land which we are getting at very cheap price. So I want to take it in the Himachal Pradesh. I just want to expand my plan. So, sir, I want land, and that's why I need to invest. I will today. I will set aside 25,000. It's similar, beta. It's like your father is earning, but he cannot give you all earnings of him. He is going to save some amount for his after 60 retirement age, or for your marriage, or daughter's marriage, or son's marriage, or for his some likings, like unko car leni hai, yeah, he wants to buy some flat. So he is saving money. Money saving is known as reserves and surplus. If you are saving for some specific purpose, it is specific reason. And suppose he is saying, no, sir, in future we need this money. So it is called a general reserve. It is a general reserve. Sir, we want money, but we do not know exactly for which purpose I'm taking about. So general reserve, he invested 75,000. And now he decided to give money, that is a P&L amount. P&L amount is 50,000 balancing fee. Now this is available. See, this is available for investor, shareholder who is having shares. And this amount which is available for shareholders is called as distributable profit. Distributable profit. See, one by one wordings. Today we are in the process of understanding each and every concept. Distributable profits. Distributable profits, sir. In accounting language, it is called as divisible profits. क्या बुलाते इसको? डिविजिबल मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेबल. डिविजिबल मतलब क्या? Distributable. Distributable means what? And when you are going to distribute this, it is called as dividend. Understood the wordings? What is dividend? Those who are from science background. Dividend means that reserves which you are going to distribute, it's called as डिविडेंड. डिविडेंड. कंपनी ने 2 लाख रुपया कमाया, मतलब 2 लाख के 2 लाख उड़ाना नहीं है भाई. 2 लाख. मैंने पापा का अर्निंग देखा, 50,000 रुपया मिला इस महीने. 50,000 मिलने के बाद तुरंत मैंने बोला नहीं, मुझे दोस्तों को पार्टी देना है, यहाँ वहां जाना है. नहीं भाई, नहीं चलेगा. अरे पापा का कुछ फ्यूचर है क्या? नहीं. पापा को फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या है? वो रिजर्व्स है. वो रिजर्व्स है. और जो पैसा आपको दिया वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है. जो दिया 5,000 उड़ा के ला, तो वो आपका बर्थडे 5,000 दिया पापा ने, खुश होके, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा. डिविडेंड होगा. डिविडेंड होगा. समझ में आ रहा है कुछ? अभी इजी लग रहा है?
हाँ सर, अभी इजी लग रहा है। सो ये नेट प्रॉफिट में से डिवाइड हुए, ये नेट प्रॉफिट में से डिवाइड हुए, और जब प्रॉफिट में से डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग पार्ट्स में, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, लैंड रिजर्व, फलाना और क्या क्या रिजर्व निकालेंगे, और जो लोगों के लिए अवेलेबल होगा वो हो जाएगा P&L। किसके लिए अवेलेबल हो जाएगा? लोगों के लिए जो अवेलेबल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अवेलेबल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट मतलब शेयर होल्डर्स को जो मिलता है, जैसे एफडी किया तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा। सो इफ यू आर डूइंग, यस, इफ यू आर हैविंग एनी एफडी, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन एफडी, एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, then you are getting dividend. It is called as dividend. Okay, chalo guys, easy. Reserves and surplus. Now these are, yes beta, now these are specific reserves. Investment reserve, land reserve is called as specific reserve, and general reserve and P&L are called as free reserves. They are free. Free means what? They are available for dividend in future. They are available for dividend in the future. It's called as free reserves. So general reserve is also free. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can we use that general reserve in the next year for distribution of dividend? Wait. For that you have some, yes, beta, for that you have some, yes, understand rules for distribution of dividend out of past profits. Sir, when to understand this concept? अरे इंटरमीडिएट के लिए रुक जाना थोड़ा, इंटर में कुछ तो पढ़ाएगा ना। पिछला प्रॉफिट अभी यूज करना है, किस लिए? डिविडेंड देने के लिए। हाँ होगा, सबर कर, पर इंटर में पढ़ना है। कब पढ़ना है? इंटर में पढ़ना है। सो बेटा रिजर्व्स तो पास्ट में जाके आपको यूज करने हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, पास्ट में जाके हम लोग जब यूज करना है वो रिजर्व। सर यूज कर सकते, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो कैसे करेंगे सर? करने के लिए थोड़ा सा रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कभी भी पास्ट का प्रॉफिट लेके उड़ाना चालू किया कैसे चलेगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड रूल्स फॉर दैट। इंटर में पढ़ाएगा पास्ट प्रॉफिट, बट टिल now what you have to understand, what is free reserves and what is specific reserves. Specific reserves are not available for dividend, sir, write down it somewhere. Specific reserves are not available for dividend. So free reserves available for dividend. Free reserves are available for dividend. Yes sir. अभिषेक विश्वकर्मा सिंह, सर आप इंटर में भी सिखाओगे? यस बेटा, क्यों नहीं सिखाएगा, मैं तेरे को ही सिखाएगा, डोंट वरी। इंटर में आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूंगा। मजा तो आना ही चाहिए बॉस, सब लॉजिकल है भाई, सब लॉजिकल, एवरीथिंग इज लॉजिकल इन अकाउंट्स। क्या मजा आता है समझने को, समझाने को। एक बार समझ गया ना, दिमाग में से हटना ही नहीं चाहिए, परमानेंट मेमोरी में जाना चाहिए। इट्स नॉट इन रैम, इट्स इन हार्ड डिस्क। सर अपने पास रैम नहीं है, अपने पास हार्ड डिस्क है, कैसे घुसाने का अपने को पता है, पूरा का पूरा मेमोरी में डाल देगा मैं। Okay, sir, we got this concept of specific reserve and free reserve. Now, sir, again, now what is new? This is security premium account. It is collected by the company. Sir, it is collected by the company, security premium. So what about security premium? Whether it is routed through net profit? No, sir, you directly collected it. Excess amount, sir, then it is not coming through via net profit से नहीं आएगा, ये directly आ जाएगा security premium. Sir, ये भी reserves and surplus में आएगा? Yes, because you are collecting excess amount. Sir, whether it is available for dividend? No. Why it is available for dividend? No, it is not. It is not earned from the net profit. Net profit is available to shareholders. It is directly collected by the company. Therefore, security premium is not routed through net profit. Net profit के रास्ते से नहीं आया, वो डायरेक्टली आ चुका है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वो डायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ चुका है। सर इसका यूज क्या है? कल के लिए रुकना, कल बताता है इसका यूज। सिक्योरिटी प्रीमियम टुमारो आई विल टेल यू, वेट फॉर वन डे। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कल समझेगा। ओके, सब बैलेंस शीट का रिजर्व्स एंड सरप्लस क्लियर हुआ सर? Very good. So there are two types of reserves: specific reserves
free reserves. Specific reserves, again in two parts. Routed through net profit, appropriation of profit, directly in balance sheet, security premium. One of the example. Free reserves available for dividend. Specific reserves not available for dividend. So general reserve can be used for dividend distribution. Yes, but it has some rules in intermediate. Sir, whether specific reserves are available for dividend? No. Sir, dividend के लिए available मतलब क्या? Divisible profit, distributable profit. Distribute means dividend. Distribute means dividend. Divisible means distribution. New words. Okay. Okay, sir. So till now we are clear with this concept. Sir, money received against share warrant. Share warrant क्या होता है? Intermediate. Share application money pending allotment. Sir, application money received, but we have not allotted shares. So till now it is shown in my escrow account. Now escrow account is a separate account. Separate account में रखा रहता है वो पैसा. अरे मैंने शेयर नहीं दिया, तेरे से पैसा आया, तुम्हारे से पैसा आया. I received application money from you, but I have not allotted you shares. Till that time I have to keep it somewhere ना. बैंक अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड पे क्या दिखेगा? लाइबिलिटी साइड पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. आई हैव नॉट इशूड शेयर. दैट प्राइवेट प्लेसमेंट विल डिसाइड किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना है. तब तक पैसा कहां पे है? बैंक में है. और लाइबिलिटी साइड पे क्या रिकॉर्ड करेगा? तो बैंक एसेट में बढ़ाया, इधर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बढ़ाया. सर समझ में आया? समझ में आया. नॉन करंट लाइबिलिटी सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स more than 12 months, debentures, loan, yes, long term borrowing. So debentures in third session. So debentures में मैं बताएगा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं समझेगा, सिर्फ याद कर लो. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यू विल अंडरस्टैंड इट इन द ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स S21 S22. Other long term liabilities. Liability means exact amount is known. Provision means exact amount is not known. That is the difference between liability and provision. Liability means exact amount is known. So provision, exact amount is not known. Other long-term liabilities and long-term provisions. Long-term provisions means not exactly the known amount. Your employment benefits. Employment में जो पैसा देना है, exact amount is not known. Short-term borrowings, less than 12 months. Trade payable. Other current liability and short-term provisions. So see, long-term borrowings के बदले में short-term borrowings. Deferred tax liability, trade payable. Trade payable means creditors. Creditors. Other current liability, other long-term liability, other current liability. Long-term provisions, short-term provisions. Simple. Asset side. Sir, property, plant and equipment. That is fixed asset. Fixed asset, property, plant and equipment. Tangible, जो दिखती है, property, plant and equipment. Intangible, which we can't see. Capital work in progress, accounting standard 7, not understand. Intangible asset under development, S26, you will not understand it now. Read the words. Non-current investment, more than 12 months, I have invested somewhere. Deferred tax asset, S22, not understandable. S22, सिर्फ नाम याद रखो. Long-term loans and advances, I have given loan to someone, not taken, beta, given. Long-term loans and advances for more than 12 months. Other non-current assets, residual category, बचा हुआ इसमें दिखेगा. Current assets, CIT, CSO, CIT, Commissioner of Income Tax, CS, Company Secretary, O, ऐसे याद रखना. CIT, current investment, C for current investment, I for inventory, stock, T for trade receivable, C for cash and cash equivalent, cash and bank balance, S for short-term loans and advances, given loan for less than 12 months, given, not taken, given. And residual category, other current assets. Simple balance sheet pro forma. You can read out of this all pro formas में detail में. So नीचे का part आप read कर सकते हो जब चाहे तब. आज ही read करना. In each category, what you are going to see. So see बेटा, I am giving you the challenge. जैसे challenge दिया जाता है, जैसे टाइगर श्रॉफ ने challenge दिया था सलमान खान को, और उसने जो देखा रहेगा आपने, और सचिन तेंदुलकर ने challenge दिया था युवराज सिंह को. So you can see this is a challenge by one person to another. My challenge, yes, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं without looking into balance sheet ये pro forma बोल के बताएगा. चल रही इधर से हट. हाँ, ओके, आई विल स्टार्ट. आंखें बंद होगी मेरी और आप
स्टॉप वॉच पे ध्यान दोगे एंड एसेट साइड पे मैं रुकेगा. इक्विटी एंड लाइबिलिटी, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, non-current liability, long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions, current liability is short-term borrowing, trade payable, other current liability and short-term provisions. Assets, non-current assets, property, plant and equipment, tangible assets, intangible, capital WIP, intangible assets के बाद capital WIP, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax assets, long-term loans, advances, other non-current assets, current assets, CIT, CSO, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans, advances, other current assets. My challenge कितना हुआ? 1 minute 54 seconds. इतना ज्यादा कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. रीसेट करता हूं, वापस एक बार लेता हूं. ठीक है, एक बार वापस. चैलेंज टू यू. Equity and liability, shareholder fund, share capital, reserves and surplus, non-current liability, long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions, current liability, short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provisions, current assets, non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital WIP, intangible assets under development, then non-current investment, deferred tax asset, long-term loans and advances, other non-current assets, current assets, CIT, CSO, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. हाँ, वही मैं बोला, इतना कैसे हो गया? 23 seconds challenge to you. Okay. 23 seconds का चैलेंज है आपको. आज का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए एंड ट्राई टू लर्न दिस बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा. ओके, वेरी गुड. इन नेक्स्ट सेशन यू कैन टेल मी योर टाइमिंग्स फॉर बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा. देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन में. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली टुडेज रिवीजन, फास्ट क्विक रिवीजन. यस, फर्स्ट वन, shares, company accounts. Company accounts में सबसे important is that you are going to prepare balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement of changes in equity, and notes to account. Now, what is this? That I will tell you later. Then after that, I started with the capital part. Capital is divided in authorized capital. Authorized capital means which you registered capital. Then beta, second one is your reserves and surplus. Authorized capital के बाद issued capital हो जाएगा. Issued capital के बाद subscribed हो जाएगा. Subscribed के बाद पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल होगा और उसके बाद पेड अप कैपिटल होगा. तो ये कुछ चीजें थी. इन केस ऑफ अलॉट शेयर्स एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, देन first call and second call. So in entry will be application में bank account debit to equity share application, then equity share application to equity share capital, then equity share allotment account debit to equity share capital, to security premium if any, and bank to equity share allotment. Then first call account debit to equity share capital to security premium, or by bank account debit to first call, and second call account debit to equity share capital to security premium if any, and then bank account debit to second call. After that balance sheet का pro forma हमने देख लिया था, जो आपको सबको 23 सेकंड में मैंने 23 seconds is a challenge for me. आपका चैलेंज ये है 23 seconds is very difficult to beat, but ठीक है, ट्राई कीजिए. मैक्सिमम टाइमिंग 50 सेकंड तक करिए. 50 सेकंड, 50 seconds फॉर यू. चैलेंज एक्सेप्टेड. यस, वाओ. चलिए, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. मैक्सिमम स्टूडेंट्स से ये शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ICA क्लासेस को अटेंड करने लगाइए. दिस इज दी बेस्ट थिंग फॉर यू. और यहाँ पे हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे एंट्रीज एंड इक्वेशन. सो इलस्ट्रेशन. यस, नाउ टुडेज होमवर्क, try to solve unit number 2. एक तो first balance sheet you have to read, then second chapter, second unit, उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 1 2 3 4 जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. सो यूनिट नंबर 2 यू कैन सॉल्व क्वेश्चन. सो टुडेज होमवर्क, आई होप you are clear with this concept. Thank you. We will meet tomorrow. Bye.